नमस्कार आमर नेक्स्ट एपिसोड पई समस्तन को वेलकम ओसा हेल्थ एंड वेलनेस तरफ रु रश्मि कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सबु थरा भलिया जस्ट वांट टू लेट यू नो जे एटा आमे समस्तन को हेल्प करिवा पई हमर ओपिनियन दोचु किंतु फाइनल ओपिनियन होची आपनकर आ आपनकर निज डॉक्टर कर नेक्स्ट स्लाइड रश्मि सो एई स्टेज रे एबे मु वेलकम करिवि हमर ओसा हेल्थ एंड वेलनेस रो चीफ डॉक्टर देवाशीष राय टू स्टार्ट द मीटिंग देवाशीष राय Thank you, Sangeeta. Namaskar. Good morning and good evening, everybody around the globe. And thanks for joining back again for this weekly Amora Saturday session. I'm in COVID situation. We have promised to stay by our ODIA community across the globe. And for that, this is our 7th episode, and we are getting wonderful response and feedback. And thank you so much. Ajira topic is a unique topic. I mean, select COVID and heart. And COVID and lungs. COVID रे heart रे कौन होची, COVID रे lungs रे कौन होची. These are the things आमे सब डॉक्टर मैंने we know. But common लोग को generally जानी पारंतनिया सब बड़े question रहती कि heart रे कौन आला, lungs रे कौन होची, pulses कौन होची, hospital केतले जिबा, केते बड़े intubate करिवा. These are the very common questions. आमे decide कलो आमे ओडिया community को we have to make them aware. जोटा कि आमे डॉक्टर मैंने जानू चु अपन मन को very common terms रे. इमती जनेवा कि what is going on with the heart and the lungs COVID time. So without further delay, I welcome all of you and let's go to the expert panel of experts जो हमारा अच्छे अपन मन देखिए हमारे internal panel से अच्छे समझते हैं और हमारा guest speakers Dr. S.N. Rautray, he is cardiology chief in SCB Medical College. अपन तंकरा beautiful presentation सुनी पे और सी question answer पे कि he'll be here and I welcome Satya Bhai, whom we proudly call as Satya Bhai, to the team. Then we have Namaskar. Namaskar. And we have Dr. Jyoti Pradhan, our budding interventional cardiologist from Michigan, Detroit, assistant professor Oakland. He is there with us to take your questions and answers. We have Professor Dr. Manoranjan Patnaik, HOD Pulmonary Department, SCB Medical College. And he's a personal physician of our chief minister also, and he has done a lot of works which you will come to know slowly. Then welcome Dr. Jitendra Patra, associate professor, pulmonary department. And we have our global ambassadors, Archita Sahu and Sabyasachi with us all the time. Thank you again. And welcome to the internal core of experts, Nanak Bhai, Sangeeta, Atoshu Bhai, and everybody else. So saying this, I would like to welcome our global ambassador Archita Sahu, who is a Oriya movie superstar, to say a few words. Thank you, Archita. समस्तंकु नमस्कार प्रति सैटरडे भली एई सैटरडे मध्य मु भी साधारण लोकन को भली अपेक्षा रे अछि आज हमर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमको आज कोन एडवाइस देबे केमिति गाइड करिवे काहे कि ना आमे तो केही भी प्रिपेयर नथले ए भली गोटे सिचुएशन पाइन कि प्रथमे थिला कि जे सिम्पटम्स कोन तापरे धीरे धीरे आसिला मेडिसिन्स देन तापरे बे पोस्ट कोविड रे एते गुडे कॉम्प्लिकेशंस होचे जे केही किछि बुझी भी पारु नाहंते सो आई थिंक आज बहुत साधारण भाषा रे आमे माने किछि किछि ज्ञान होई विषय पाइबो सो दैट आमे कोन से एफर्ट सपोर्ट फेक मेसेज को खोजी की घंटी की निज को माने बुझिबा को चेष्टा करिबो नाही सो मु बेसी समय नेबी नाही हमर एक्सपर्ट्स मान को पाखु गइने जिबा जो माने कि कोविड रिलेटेड अनेक गुडे क्वेरीज और डाउट्स हम मानकर क्लियर करिवे. Thank you, Archita. Thank you for the wonderful message. Next question, next slide. Yeah. So here I would like to welcome Dr. Sangeeta Pradhan, our core group, our favorite sister, to come to the screen and introduce others. Thank you, Sangeeta. नमस्कार एबे ए स्टेज रे मु वेलकम करिवि हमर मेंटर हमर सीनियर मेंबर नानक भाई टू स्टार्ट आवर मीटिंग एज यूजुअल सबुथर ठाकुरन को प्रे न करिकरी आमे आगु को बढ़ी परिबानी नानक भाई प्लीज म्यूट अछंती कैन यू अनम्यूट. Dear brothers and sisters,
Namaskar. Let us all pray for a moment. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvighnan Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Shanti Shanti Shanti. The English translation is as follows. Salutations to Lord Ganesha, who has a curved trunk, who has a large body, and whose splendor is similar to million suns. O Deva, please make our undertaking free of obstacles by extending your blessings in all our works, always. Next slide, please. At this critical period, the mightiest weapon to combat this epidemic is love. Love always wins and brings happiness. In chapter 9 of the Holy Bhagavad Gita, Lord Krishna defines love as whatever one gives me in true devotion, fruit or water, a leaf, a flower, I'll accept it. That gift is love. And as one of the most powerful instructions to us, he declares, whatever you do, whatever you give in charity is an offering to me. Therefore, let us spread love and bring happiness to all. Thank you. It is now my privilege and honor to request Dr. Devashish Rai to take over. Thank you. Thank you, Nanbike. Such a wonderful prayer to start with every session. God bless you. And God bless everybody who has joined us. So here, go to the next one. So here, I would like to again reiterate that our COVID project ame koruchu, and apraman dekhibe the name is Heal Odisha, Build Odisha, Help India Heal. Let's go to the next slide. So ଏଥିରେ ଆମର ଦେଖିବେ updates ହଉଛି ଆମର the अमृत धारा जोड़ा start ହେଇଛି भुवनेश्वर and it is in the news and it's like a wonderful job. बहुत बढ़िया feedback मिलुଛି लोगों को help ପାଇଁ कि food भी दिया होची, emergency services, yoga भी अच्छी. And next slide. And it देखिबे एम्स भुवनेश्वर every Sunday जो आहार केंद्र बंद ही होची गवर्नमेंट रो पेशेंट्स रिलेटिव एंड फैमिली माने खाय पाउन नंदी जो माने गांव बसचंती. This is the food being served every Sunday for 2 months. Next slide. एटा देखिबे आपण हमर एबे स्टार्ट हला ई वीक रे टिटलागढ़ रो अमृत धारा रो फूड सर्व होची सेम पेशेंट्स हाउ पेशेंट्स को फैमिली मानु पे की with all proper hygiene. It's a collaboration with Lions Club of Titlagarh जो माने बहुत बढ़िया काम करचंती से माने हमर लोकल कोलैबोरेटर. So OSA Health and Wellness along with Lions Club of Titlagarh has started food service to the patients and their families. Next slide. এটা देखिए हमर बरहमपुर रो अमृत धारा in collaboration with the Rotary Club of Barhampur हमर ग्रोसरी पैकेट गां रे सब दिया हिची आ सब फैमिली की जाई की गोटे गोटे वीक पई की we are giving grocery packet पूरा स्टैम्प पे की with proper hygiene. I mean just अपन को किछटा pictures just to next. Please mute your microphone. Thanks. एटा देखि बेटा आजी लंच रे SCB Medical College Cuttack रे in collaboration with Lions Club of Cuttack and Marwari Yuva Manch of Cuttack amara food distribution aji heichi. Professor Jayant Panda, HOD of medicine, and tanko puo, they were personally there for 3.5 to 4 hours. Some patients ko family and relatives ko this is started today. SCB रे amar प्रत्येक Sunday भी amar start habo kali भी habo. Next please. एटा गोटे picture of the distribution in SCB aji. Thank you. एटा देखिए अमृत धारा in Barhampur in collaboration with the Rotary Club. Post COVID patient को हमें admit करे पे जो रखिचु कराई ची shelter अमृत धारा सेठी yoga classes होची. Next. So these are the in summary रे मुझे कहली एगुरा अछि तापर हमरो
Next week, we are starting in Sambalpur, in Berhampur, as well as in Titlagarh, full oxygen shelters start with Amritdhara, along with the food, grocery, and emergency services. Thank you so much. Next slide. So please, if anybody is touched and wants to come forward and contribute, please in our Help India Heal Fund donation request. And if you have done, thank you so much. And if you have not done and plan to or think of, please don't hesitate and let us know. Thank you. So saying this, our next topic, we always try to stay ahead of the curve. Upon third wave aschi India ko potentially. So next topic will be COVID-19. What's next? Delta variant. जो Delta mutation virus is very more infectious and dangerous. Tapare we'll make a humble attempt to present some facts about Delta mutation, possible COVID third wave. Thank you. So now I would request our program coordinators for this program today is Dr. Sangeeta Pradhan, and then Dr. Bashan Mahapatra, our intensivist, Padavai, and then question and answer coordinators will be Dr. Atarsh Naik, who is the interventional cardiologist, our core member, and I thank you very much from my bottom of my heart. Sanjay Agarwal, our pulmonologist, Sarna Bhai from California, and Dr. Nihar Jana. Next. So saying this, I would like to welcome Dr. Sangeeta Pradhan again. Thank you. Namaskar. Thank you, Devashish bhai. ताले विघ्नहर्तांकर प्रेयर परे आमे आउ डरिवार कोन अछि एक्सपर्ट्स अछंती आम संगरे आमे सिखिबा आगु को जिबा सो बॉडी रो दीटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट ऑर्गन हला हृदय हार्ट आउ आपनकर लंग्स जोथरे की ब्रीदिंग हुए सो हार्ट होची गोटे ऑर्गन जोटा की फर्स्ट स्टार्ट हुए मा पेटरे थिला बेलठू और लास्ट ऑर्गन टू स्टॉप सो विदाउट मच अडू चलंतु जीवा हम एक्सपर्ट को पाको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी सत्य भाई वेलकम स्टेज इज योर्स थैंक यू संगीता एट द आउटसेट मु ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका को बहुत धन्यवाद दूची ये जो इनिशिएटिव नै चंती एवं भगवान कर गोटे प्रवक्ता अछि lend your hand that is better than lending your tongue कहवा अपेक्षा हाथ बढ़े की साहाय्य करन आपण मन हाथ बढ़े की जो साहाय्य करचंती सेटा सब बड़ कथा एवं मु समस्त को अपील करबी समस्त एतरे मिसंतु समस्त एतरे सहयोग करंतु तापर हम जीवा हार्ट विषय किछि कहया पे एवं जोटा हमर हला हमें कम समय भीतर कहि के बेसी समय रखिबा क्वेश्चन आंसर पे प्रथमे मु सही प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची समस्त को भल रखिचंती समस्त भल रखंतु इवन आमे समस्त निज निज देखि परिबा वर्चुअल डिजिटल माध्यम रे सेतिकी भी करिया दियंतु धन्यवाद नेक्स्ट आपण ए जो पिक्चर देखुचंती एटा को साधारण लोकन पय मु एति कहबी जे कोरोना वायरस जोटा सेटा के एक्चुअली प्रथमे रेस्पिरेटरी सेल बा जोटा को फारिंग्स ट्रैकिया लंग्स एविटी पसे तापर वायरस रो ग्रोथ हुए तापर लंग्स रो मेनली डिजीज करे तापर गोटे साइटोकाइन स्टॉर्म बा इन्फ्लेमेशन चारियाडे करे ई हार्ट ता तीनटा स्टेज रे हार्ट को अफेक्ट करि पारे फर्स्ट स्टेज रे जो वायरस पसिला सेतेले जो स्प्रेड करिवो तापर स्प्रेड कला पर डायरेक्ट हार्ट को अफेक्ट करि मायोकार्डाइटिस करि पारे ता पर स्टेज रे जते लंग्स को अफेक्ट करिवो हार्ट और लंग्स गोटे दी भाई भलिया काम करन कारण से काम ऑक्सीजन जनकर अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करिवो आ अन्य आडू आनी तक पठेबो डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करिवो तनु सेठी द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर डिफेक्ट हला हार्ट को अफेक्ट करिवो तापर आसे जो साइटोकाइन स्टॉर्म थर्ड फेज सेतो चारियाडे इन्फ्लेमेशन होची से इन्फ्लेमेशन बेले मुख्यतः हार्ट से समय अफेक्ट होची तो तीन प्रकार मुख्यतः अफेक्ट होची गोटे एक्यूट कॉर्नर सिंड्रोम बा जोटा को हार्ट अटैक बोली कहंती एवं द्वितीय होची हार्ट फेल्युअर एवं तृतीय हला एरिथमिया खाली शॉर्ट रे कहि देबी हार्ट अटैक सबुठ इंपोर्टेंट एट काहे कि हमको जदि हार्ट अटैक रो सिम्पटम होची लोक को सेठा डरी कि न जाय कि जीवाटा भूल आगे डाक्टर सहित संपर्क प्रतिष्ठा करिया दरकार
तार कौन ट्रीटमेंट से जरूरी शीघ्र करिया दरकार से बेले हार्ट फेल्योर सिम्पटम डेवलप कला धई सई लागला ताहले भी डॉक्टर को संग संग कांटेक्ट करिया दरकार कैन बहुत समय एटा देखा दी जदियो मॉडरेट टू सीवियर से मानकर हुए माइल्ड वालांकर भी हेई पारे एवं एरिथमिया मीन हार्ट बीटिंग रा अनियमितता केतले जोर हार्ट चालुची कम चालुची पाल्पिटेशन हबो एवं एइथरे बेले सडन कार्डियक डेथ हबार भी चांस अछि नेक्स्ट आमे जिबा एबे देखिबा को मानकर एटे बेसी हबार चांस फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ओल्ड पीपल जो ओल्डर एडल्ट्स so you can see older adult this definition country to country vary करूची हम इंडियन पे जोटा वेस्टर्न कंट्री बहुत ओल्ड जोटा कहउचंदी हमर इंडियन मानकर मिडिल एज को भी आरंभ होय ओल्डर एडल्ट्स एवं को मानकर हबो बेसी हबार चांस अछि जो माने हार्ट डिजीज अछि डायबिटीज लंग डिजीज किडनी डिजीज बा कैंसर मेडिसिन खाउचंदी से मानकर बेसी हबार चांस अछि एबे चांस हेले से मानकर प्रोग्नोसिस अर्थात डिजीज रे क्षति मध्ये बेसी करि पारे तापर आसे द प्रेग्नेंट लेडीज में कौन होची एक्जेक्टली जाना नहीं किंतु एबे देखा जाउची जे माने प्रेगनेंसी अछि से माने प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट रे न रहिले से मानकर शीघ्र लेबर पेन है कि अल्प दिन रे पिलार जन्म हो जाई पारे एवं पिला मानक विषय जणा होची थर्ड फेज आसुची सेकंड फेज भी केते जगह पिला मानक अफेक्ट कलानी किंतु एपर्यंत देखा दैछि पिला मानकर बेसी सीरियस हो नाही किंतु जदि थर्ड फेज रे कोन हबो को प्रकार हबो हमें जानि नै विल गो टू द नेक्स्ट तम देखिबा हमें ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन बहुत कम समय सारी कहना हमर विल गो नेक्स्ट हम देखो ब्लड प्रेशर यदि ब्लड प्रेशर अच्छी नेक्स्ट स्लाइड जदि ब्लड प्रेशर अच्छी मन रखा दरकार जदि जनकर ब्लड प्रेशर अच्छी कोविड हैला ताहले जहाँ से ब्लड प्रेशर औषध खाउचंदी सेटा को कंटिन्यू करिवे किछि चेंज करा दरकार नै जदि हम जोटा कहले जे माइल्ड मॉडरेट डिजीज थिबो माइल्ड थिले त से माने घरे मोस्टली ट्रीटमेंट बे डरिवार नाही बहुत लोक माइल्ड ट्रीटमेंट माइल्ड डिजीज होची माइल्ड डिजीज रे से माने घरे ट्रीटमेंट हेबे जो औषध खाउचंदी से औषध खाइबे एथि गोटे थिला जोटा गाइडलाइन मीडिएटेड जहाँ डाक्टर दउचन डाक्टर पक बेसे न आसी कि फोन ने बा टेलीमेडिसिन ने कंसल्ट करके भी औषध खाई परिबे घर रखी ट्रीटमेंट हेई परिबा एटी गोटे जिंस सब क्वेश्चन उठे जे एस इनहिबिटर बा एआरवी एस इनहिबिटर मींस रामिप्रिल एसिनोप्रिल लिसिनोप्रिल एनालाप्रिल ऑल प्रिल एंड ARV मींस साटन लोसाटन टेलमिसाटन अल्मिसाटन एटा मझिरे उठ आसले एमान को देले काले अधिया किछि हबो कि सेमिति किछि नाही जो माने ए ड्रग खाउचंदी सेमान ड्रग कंटिन्यू करिवे बंद करिया दरकार नाही या सेमानकर जदि अन्य कोनोसी प्रॉब्लम थाए तो डायबिटीज थिबो हार्ट फेलियर थिबो एवं ब्लड प्रेशर थिबो से माने एटा खाउतांती एटा जदि बंद करिवे ताने क्षति होबार चांस अछि तो एटा कंटिन्यू करिया दरकार ए प्रकार मेडिसिन कंटिन्यू करिया दरकार हमें जीवन नेक्स्ट को एठ मु कहू देखंतु सेल घरे रही अपन निजे डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन ने बीपी मेजर करी सेटा करि परिबे जदि हॉस्पिटल एडमिशन हो पड़िला कोविड कारण ताहले सेटा डॉक्टर बुझिबे केमि से ट्रीटमेंट करा जिवो से विषय हमें बेसी मुंड खेला दरकार नै हमें जे नेक्स्ट को देखो जदि हार्ट अटैक हला ताहले एठी खाली गोटी कथा कहबी आमे प्रकृत हार्ट अटैक हेले 24 घंटा भीतर जदि पेशेंट डाक्टर पाखे पहुंची पाला साधारणतः प्राइमरी पीसीआई बा संगे संगे एंजियो करके जदि दरकार पड़े स्टेंट लगा जाता है एठी बर्तन कोविड सिचुएशन में गाइडलाइन बहुत वेरी करछि जोठी ठीक टाइम रे हमें न करि परिबा प्राइमरी पीसीआई जोटा कि हमें साधारणतः 90 मिनिट डोर टू बेलून टाइम 90 मिनिट भीतर करू तो न करि परिबा डिले होउची सेठी हमें इंजेक्शन देई कि जो ब्लड क्लॉट हेछि ताको डिजॉल्व करि परिबा तेणु से तेणु जहाँ भी है डाक्तर परामर्श ना दरकार डाक्तर डिसाइड करेंगे तापर को प्रकार ट्रीटमेंट हवा दरकार तेणु हार्ट अटैक हार्ट फ्लू निश्चय आगे डाक्तर परामर्श ना दरकार यदि कोविड पॉजिटिव डेफिनाइट अच्छी कोविड हॉस्पिटल रे हेबे ट्रीटमेंट यदि कोविड पॉजिटिव नाही एवं डाक्टर से सिम्पटम हो निश्चित भाव में डाक्तर जो कोविड नॉन कोविड एरिया को जिबे सेठी डाक्तर देखि सारा पर जदि जहाँ बाहला से ट्रीटमेंट करेंगे हमें आपर को जीवा अगेन दिस अनदर टाइप ऑफ हार्ट अटैक सिमिलरली ए हार्ट अटैक रे बहुत लोग घरे रही ट्रीटमेंट हो पारे डाक्तर साने परामर्श कले गोटे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन अच्छी से इंजेक्शन दे घरे बहुत ट्रीटमेंट हो पारे जदि निहाती दरकार पड़े डाक्तर परामर्श देवे ताले एडमिशन हेबे एठी जत्ते कम एडमिशन हेई घरे रही ट्रीटमेंट होबाकू चेष्टा करिवे जिबा आपर को आज्ञा एक्यूट हार्ट फेलियर एठी हार्ट फेलियर जदि जनकर आगुर हार्ट फेलियर क्रॉनिक हार्ट फेलियर अच्छी एवं तार कोविड हैला ताले सेटा प्रेसिपिटेट करि पारे हार्ट फेलियर बा जर मायोकार्डाइटिस जोडा हम कहउतले हार्ट रो मसल इन्फ्लेमेशन हेले एबा निमोनिया हेले भी
हार्ट फेलियर डेभलप करि पारे कारण निमोनिया हार्ट फेलियर को प्रेसिपिटेट कर अधिका कर दिया तेणु एठी जहाँ गाइडलाइन ट्रीटमेंट जहाँ करिया था सेही ट्रीटमेंट हबो सेत्रे आपण व्यस्त होबा दरकार नै डॉक्टर से कथा बुझिबे आ परे देखिया क्रॉनिक हार्ट फेलियर जोटा एटी अगेन क्रॉनिक हार्ट फेलियर साधारणतः जो ट्रीटमेंट चली थाए तार क्रॉनिक हार्ट फेलियर अच्छी सेमानकर बेसी कोविड हैला सेमाने सीरियस होबार चांस अधिका रहउची तेणु सेमाने सबले केयरफुल हेबे दूरे रहबे केमिति कोविड टा न हो से देखिबे कोविड हैला संगे संगे डॉक्टर परामर्श नेबे एवं संगे संगे सेही सरे ट्रीटमेंट आरंभ करा दिबो नेक्स्ट होची जदि हम मायोकार्डाइटिस जोटा हम कहउतले विभिन्न स्टेज रे मायोकार्डाइटिस हेई पारे मायोकार्डाइटिस हेले चेस्ट पेन हबो धई सई लागिबो हमरो साधारणतः सबुआडे करा जाउची ट्रोपोनिन टी सेटा बढ़ी जिवो एवं अन्य जिनस ईसीजी इको द्वारा जाना पड़िबो ट्रीटमेंट एका प्रकार सेति पई मेनली आम जानिया जो सन्देह होउची डाक्तर परामर्श नबा घरे न रही डाक्तर परामर्श नेले प्रकृत चिकित्साटा पाई परिबा आपर को जीवा नेक्स्ट जी आर्डिथमिया एटा गोटे भारी कम जिनस जोटा कि आम कहूँ कोविड रे हार्ट इरेगुलर बीट होउची एटा इस्कीमिया माने ब्लड जदी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहला ता रिलेटेड हे पारे ता पय जो औषध दबा से डिफरेंट मेडिसिन में होबार चांस अछि तेणु जदि हार्ट रो इरेगुलर बीटिंग आपन पाल्पिटेशन हला छाती धड़धड़ हला ताले कोविड अच्छी बा पोस्ट कोविड संगे संगे डॉक्टर परामर्श नबा उचित आप और जीवा यस आई थिंक एटा को बेसी हम कहबानी जदि से एंटीवायरल ड्रग केतेटा क्यूटी प्रोलंगेशन करे सेटा को हम छाड़ी देबा सेटा डॉक्टर से नेक्स्ट कौन हम कॉमन एडवाइस जदि जनकर कोविड पॉजिटिव अच्छी से साधारणतः को प्रकार औषध खाउछन जो कॉमन एंटीवायरल औषध एंटीबायोटिक अन्य छड़ा से ब्लड थिनर खाइते पारंती आगुरु जदि से हार्ट प्रॉब्लम थिबो से माने भी ब्लड थिनर खाइते पारंती ब्लड थिनर माने हम दुई प्रकार अछि ओटा एंटी प्लेटलेट ओटा साधारणतः समस्त जानिछंती एस्पिरिन एवं क्लोपिडोग्रेल कॉमनली दिया होची एबे टिकाग्रेलोल भी दिया होची एही प्रकार औषध जो माने खाउछंती बा जनकर एंटी कोआगुलेंट लाइक एसिट्रम वारफारिन बा न्यूर एंटीकोआगुलेंट डाबिगाट्रन एब्राक्साबान एगुडा जो खाउछंती बा एटा का ट्रीटमेंट बेले दिया हला ताने हम देखिया कथा जानिया कथा जदि किछि ब्लीडिंग हला कोनोसी जगह रु परिसरा रे हो झाड़ा रे हो कि कोनोसी स्पुटम रे हो ताले संगे संगे डॉक्टर को परामर्श न उचित दे स्टेरॉइड बटिका दिया जाउची रोग रे दिया जाय मीडियम एंड सीवियर डिजीज रे दिया जाय ताले ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करियार चांस अछि त मझरे मझरे ब्लड शुगर करिया दरकार न्यूट्रिशन भलो खाद्य जोटा प्रोटीन विटामिन मिनरल युक्त खाद्य खाइबा दरकार एडिक्वेट हाइड्रेशन पानी बहुत पीवा दरकार एठी जाना दरकार जो मनकर हार्ट फेलियर अछि से मन पे पानी रो लिमिटेशन अछि डॉक्टर को परामर्श नै जति पानी से पियो कहबे सेही सर पिया दिबो इट सबटु इंपोर्टेंट मेंटल हेल्थ पॉजिटिव एटीट्यूड नै रहया अछि कहला हमर जानिया दरकार जे हम हार्ट प्रॉब्लम अछि बोले हम डरी जिया दरकार नै कहना 80 रु 85% रोग माइल्ड रोग जो मानकर मॉडरेट सिवियर हो तारु बहुत कम लोकंकर हार्ट प्रॉब्लम होची एवं एका देखा जाय वेस्टर्न कंट्री हार्ट प्रॉब्लम जत्ते इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे ताटु कम अछि डाटा जदियो पूरा ठीक भाबरे नाही तथापि आमे डरिया दरकार नै एवं सबटु इंपोर्टेंट जनकर हार्ट प्रॉब्लम अछि एवं से एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल बा एंटीकोआगुलेंट अदर ब्लड थिनर खाउचंती कोनोसी औषध बंद करिया दरकार नै सेउडी को बेले बेले हमकु रक्षा करता है असुविधा न होबार रक्षा करता है आप रोग जीवा साधारणतः 4 प्रकार कंप्लेन एमन पोस्ट कोविड स्टेज आसी पारे चेस्ट पेन ए पोस्ट कोविड में गोटे कथा कहउची इमीडिएट पोस्ट कोविड और लॉन्ग आफ्टर आजिकल को लॉन्ग कोविड एलओएनजी लॉन्ग कोविड बहुत दिन धर की सिम्पटम भी रोची देखा जाउची जे साधारणतः 4 सप्ताह 6 सप्ताह भीतर जो मॉडरेट टू सीवियर अछन कमी जिया दरकार एवं जो माने माइल्ड अछि 1 टू 2 वीक्स रे कमी जा किंतु बहुत समय देखाउची एटा बेसी दिन धरी रोची तेणु सेही लोक मानकर यदि एही प्रकार सिम्पटम हला ताले फिजिशियन बा कार्डियोलॉजिस्ट मानकर ओपिनियन दरकार कोन पई होउची काहे कि एटा चेस्ट पेन हेला जदि तेणु से मानकर इस्कीमिया माने हार्ट को ब्लड सप्लाई रे कम होउची तेणु से विषय रे संपर्क रक्षा करी औषध खाया दरकार ब्रेथलेसनेस विश्वास में कष्ट ला माने हार्ट काले डेवलप करतो मायोकार्डाइटिस स्पॉन्डरिंग मायोकार्डाइटिस जो माइल्ड मायोकार्डाइटिस थाए आस्ते आस्ते बॉडी की पर स्टेज रे देखा जाउची जे हार्ट रो मसल दुर्बल हो जाउची हार्ट रो पंपिंग कमी जाउची तेणु से क्षेत्र रे ब्रेथलेसनेस होई पारे आउ पाल्पिटेशन हार्ट इरेगुलर बीटिंग हम बहुत लोक देखु हार्ट बीट अधिका होउची किछि लोक भी कम होबार भी देखा जाउची एवं समय एगुडी का नथा कि सिवियर वीकनेस प्रोस्ट्रेशन टायर्डनेस हार्ट पंपिंग कमी गले बा हार्ट रेट अधिका लेवल हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप करि पार नै तो सिवियर वीकनेस होउची वीकनेस हार्ट पे ही पारे
लंग्स हो पारे अन्य कारण हो पारे किंतु ए गुडा कंप्लेन थिले संगे संगे डाक्टर परामर्श नेबा उचित आ परक जीवा अच्छा एठी गोटे हला पोस्ट कोविड कार्डियक रिहैबिलिटेशन मैं कहयो चाहूची जे कोनोसी क्रोनिक डिजीज परे बा हार्ट अटैक बा हार्ट फेलियर परे कार्डियक रिहैबिलिटेशन दरकार किंतु पोस्ट कोविड रे कार्डियक रिहैबिलिटेशन आउरी स्लोली रिहैबिलिटेशन हो जोटा कि हमें जते क्विकली अन्य स्टेज रे करंती सॉरी हमें जानिया दरकार हमें संगे संगे एक्टिविटी करबा नाही जदि में मॉडरेट इंप्रूव करिचे तने स्लोली स्लोली करिया अछि सो प्रोफेशनल आफ्टर 10 days यू कंसल्ट योर डॉक्टर इफ डॉक्टर से डॉक्टर कहले तुम आरंभ करिवो रिहैबिलिटेशन it will be extremely beneficial but it should be slow and steady and professional work to be resumed in a graded manner gradually you will have to increase the workload নহলে suddenly बेले बेले देखा होची हार्ट अधिका हठात काम कर देले अधिका एक्सरसाइज कर देले हार्ट भी एटाको संभाली करनी से भी असुविधा पडुची फेल्युअर हे जाउची नेक्स्ट या तो हमर मेनली जोटा म कहउतली स्ट्रेस इज द इंपोर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस देखो आम स्ट्रेस को कंट्रोल करिया बहुत जिनस जो मानकर कोविड होउची बा सेमानकर रिलेशन डाक्टर सेमानकर रिलेशन जो माने ड्यूटी करछंती अदर पैरामेडिक्स सो टू से होल ह्यूमैनिटी इज अंडर स्ट्रेस ना तेनु स्ट्रेस कंट्रोल इज सबटू बहुत इंपोर्टेंट तेनु मेनली मो ओपिनियन ने बहुत लोक माने 5 ways to manage stress number 1 is be positive your attitude should be positive be a positive attitude and think positive so next meditate during the meditation you'll have to take deep breath there are different type of meditation as you are showing yoga meditation सब आपण मान करो चंदी आर मेन हला relax your mind and go just out of mind relax करिवो environment रो बाहर पड़ के चिंता करिवो शांति रहबो चेष्टा करिवो next the god is the best doctor and best healer exercise जोटा कहली एटी बहुत एक्सरसाइज करिया दरकार एक्सरसाइज कम रे करिया दरकार एटी एक्सरसाइज मेन हला ये गोटे केमिकल प्रोड्यूस करे जोटा एंडोर्फिन जोटा ब्रेन नु बाहर दैट गिव ए पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव ब्रेन को पॉजिटिव इंपल्स दिए तेणु सेटा गोटे हेल्प करे ता छडा एक्स्ट्रा फैट बटर जा दरकार अछि वेट सेटा को सब कमी दिए नेक्स्ट एटा अनप्लग मीन्स एटी मु गया कथा बहुत लोग हमर मेनली टेंशन है जाउची जो ब्रेकिंग न्यूज दउची डिफरेंट जिनस को से माने बार बार देखौ चंदे जोडा को व्हिच इज नॉट ए many time not correct even if correct very small portion से माने को फास्ट जो ऑथेंटिक न्यूज सोर्स रो न्यूज सुनिया दरकार से सीडीसी और गवर्नमेंट पोर्टल्स सेउटु सुनिया दरकार अन्य कोन सोर्स सुनिबे नाही एवं अननेसेसरी ईमेल एंड केस डिस्कशन ऊपर जमा भाग नेबे नाही सेकंड कथा हला सब बेले दिन को 2 थर 10 रो 15 मिनिट यू एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग बाहर जाई पूरा कोन जस्ट switch off your mobile everything go calm cool and just pray god next I think adequate sleep is always 7 to 8 hours sleep is a must 7 ରୁ 8 घंटा साउंड स्लीप का निहाती दरकार एवं स्लीप बेले ही हमर बॉडी तार हीलिंग प्रोसेस करे सब सिस्टम रो हीलिंग टा ए स्लीप बेले ही हुए तो स्लीप इज एसेंशियल नेक्स्ट I will just complete it next so for happiness you will have to find out your own way to happiness you say somebody's music he must sing somebody is playing he must play somebody you find out your own way to happiness so childish heart is the best heart the happiest heart in the world next so you have to get this happiness to the balance between your mind and brain so heart and mind आ भीतर बैलेंस रखी पारले जही हमें हैप्पीनेस आनी परिबा एवं माइंड तो सब बहुत कथा कहूची करे जाय हार्ट कहूची ना ट्यू रहबो तनो ए जो जिंस को कंट्रोल हमें न रखी परिबा ताले हैप्पीनेस पाया कष्ट यू विल हैव टू कीप ए बैलेंस नेक्स्ट आई ऑलवेज से योर हार्ट इन योर हैंड काहे कि म कहे देखो एक्सरसाइज डाइट ए सब हम हाथ रे अछि स्ट्रेस ये भी किछि भाव रे हम हाथ रे जदियो स्ट्रेस सब हम बंद कर न परिबा जो स्ट्रेस को हम कंट्रोल करि परिबा स्ट्रेस को हम कंट्रोल करिबा कीप आइडियल वेट नो योर नंबर्स हमरो वेट केते रहया दरकार हमरो ब्लड प्रेशर केते रहया दरकार हमरो कोलेस्ट्रॉल केते रहया दरकार हमर शुगर केते रहया दरकार एगुडा हम जानिबा दरकार जानिबा द्वारा हम कंट्रोल रखबे जदी जनकर ब्लड प्रेशर अछि ब्लड प्रेशर कंट्रोल डायबिटीज अछि डायबिटीज कंट्रोल ओवरवेट अछि वेट कंट्रोल बा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करि परिबा
एवं आमे दे करि पाए आमे समस्त भल रहि परिबा सो आमे निजे आम हार्ट रो केयर नै परिबा नेक्स्ट मैं भगवान प्रार्थना करुँ समस्त भल रखु आम फेर समस्त मिसिबा एवं जहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन ना सब लास्ट क्वेश्चन नवा लास्ट आज्ञा ठीक है धन्यवाद थैंक यू सत्य भाई वेरी गुड बढ़िया प्रेजेंटेशन बहुत भल एते सिंपल वे रे आपण प्रेजेंट कले आई एम श्योर हमर कॉमन मास सबुठी गां गां रे खबर जीवो एबे तो लाइव अछि किंतु रिकॉर्डिंग रहिबो आगु को समस्त देखि परिबे बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन एबे आई वुड लाइक टू वेलकम आवर नेक्स्ट पार्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर Dr. Vasan Mahapatra to introduce our next speaker. Thank you, Sangeeta. प्रथमे मु आम सत्य बाबू को जे जने ओडिसा रो सुनाम धन्य कार्डियोलॉजिस्ट से नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट से बहुत कम दिन भीतर आसी सत्य आम से जॉइन करछन सत्य इज माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आम मोर रूममेट अल्प दिन थिला तापर हमें एकाठी पीजी मु सर्जरी सत्य भी डिड मेडिसिन वे आर रियली मु जेबे जाए ओडिसा आई मस्ट go visit Satya and his wife and family. So Satya is my family, more family देखिए Satya, you did a tremendous job. इतने सुंदर, you know, last word टा खाली कोई भी your health is in your heart in your hand. I mean your health in your hand. Everything. That is the take home message. आपण माने सत्य बाबू कथा सुनिले आउ निजर स्वास्थ्यर जत्न नेबे ए जो चेस्ट पेन चेस्ट रे किछि हला केबे हेले इमीडिएटली आपण जीवा पड़ियो डाक्तरखाना जेमती कहले पाल्पिटेशन है कि आपण शॉर्टनेस ब्रेथ हटा थेला एडा सब जीवे निश्चय जीवे एडा टेक होम मेसेज वर्तमान मु आम ओडिशा सोसाइटी फॉर अमेरिका रो हेल्थ वेलनेस ग्रुप आ ओडिशा डॉक्टर इंटरनेशनल एसोसिएशन तरफ आउ थरे आपण माने समस्त को व्यूअर मान को एटी स्वागत करूची हमरे सेमिनार प्रति शनिवार पर 7 दिन शनिवार हेची आपण माने एते संख्या रे जोग देइचंती आमे सुनलु 16 रु 17 हजार लोक देखुचंती एटा छोटिया कथा नो हमकु फीडबैक भी दउचंती प्लीज कंटिन्यू गिव योर फीडबैक वर्तमान ए जो आमे करूचु हमर सेंटर रे सब जो सेंटर चारटा सेंटर अछि हम डॉक्टर ए कहले सेठी लाइव लोक माने पेशेंट माने देखुचंती आमे सेंटर जो माने ट्रीटमेंट होचंती तांकर रोगी में माने तांकर संपर्क माने देखुचंती इवन रिकॉर्डिंग देखिबे आमे वी आर वेरी प्राउड टू हैव देम तेनु मु वर्तमान एति की मु स्टार्ट करी नेक्स्ट स्पीकर को कहबा आगुरु मु टिके इंट्रोड्यूस करी आपण माने सुनिले सत्यबाबू ठारू जे कोविड रोगर हार्ट ऊपर थिबार प्रभाव तार सचेतनता ऊपर तेणु आमे वर्तमान नेक्स्ट आमे आलोचना करबा ए कोविड रोगर प्रभाव हमर लंग्स फुसफुस ऊपर आपण माने जानती आम जीवन पई प्रति मुहूर्त रे ऑक्सीजन ही दरकार आ एई ऑक्सीजन रो लेवल गोटे लेवल रहबा दरकार आ जेपरी से कहले सत्यबाबू कि संगीता भी कहले ये ऑक्सीजन लेवल को अप्रोप्रिएटली मेंटेन करे पे हमर दुईटी ऑर्गन एकाठी भाई भड़िया जेम सत्यबाबू कहले दुई भाई भड़िया काम करिया दरकार हार्ट आ लंग्स जदी एथ्रु गोटे हार्ट की लंग्स रो काम कमी जाए हमर ऑक्सीजन लेवल निश्चय अफेक्ट हो तेणु आमे एथ्रु आमे सेथि पई तार से विषय में डिस्कशन करिया आ तापरे हमर जदि देहर कौन हुए कि कोविड रे मु टिके खाली ब्रीफ कह कोविड रे कौन हुए आम से लंग्स भीतर पानी जम जाए जेन सत्यबाबू कहले जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुए से जमी गला पर ऑक्सीजन सप्लाईटा बंद हो जाए तापरे ऑक्सीजन कमी कमी गले किए एनआईवी रहे वेंटिलेटर रहे एक्यूमर भी रहे किंतु बहुत लोग भी एथरे बंची जाती बंची गला पर तार सुदूर प्रभावी इफेक्ट भी बहुत पड़े से विषय आम आलोचना करिया मु एथिमे आज इनवाइट करबी हमर निजर सान भाई एठिकार संजय अग्रवाल डॉक्टर संजय अग्रवाल से आम संगे अछंती से माने अल्प घंटा भितर आमे कहलौ से प्रिपेयर करले बहुत स्लाइड आ से जने पल्मोनरी क्रिटिकल केयर से सबु थर आम संगे क्वेश्चन आंसर नियंती संजय प्लीज कम एंड प्रेजेंट Thank you, Basant Bhai. After the presentation by Dr. Rautre, you know, he presented such a beautiful presentation on cardiac. So I just saw, before we invite the esteemed faculty, Dr. Manoranjan Rautre and Dr. Jitendra Patra from SCB Medical College Pulmonary Department, I thought I'll pass a few, a take-home message, if you will. And I wanted to show some slides about how a lung would behave and what to look for.
So in India, at this moment I have taken care of almost 100 patients in the last couple of months, and everybody is coming with a CT scan or an X-ray. So in this platform, we had talked about oxygen saturation in the past. We have talked about classification of categorization of COVID, whether it is mild, moderate, or severe, and CT scan scores and COVID RT-PCR testing scores and whatnot. So I just wanted to give a pass-home, take-home message on this point. Dr. Manoranjan Patnaik, he's a professor in SCB Medical College. He will talk more about the pulmonary complications in a long COVID syndrome that Dr. Rautre talked about just now. But I wanted to give you a kind of brief as to what to look for. So this is a normal X-ray which you see on the screen, and the right side of the lung, the heart in between, and the left side of the lung. So there are two lungs. The right lung is made of 3 different lobes anatomically, 3 different parts. But on an X-ray, which is anteroposterior and 2-dimension view, we cannot differentiate those upper lobe, middle lobe, and lower lobe. And the left side of the lung is made of 2 different sections, upper lobe and lower lobe. And just like you see a tree, it has a main trunk and branch, multiple branches before it reaches the leaves. You can upside down, and that is how a lung is made. So you can see branch, and it ends up in those small balloons, which are called alveoli. Not to talk too much about medical terminology, but those alveoli are like balloons, just like leaves in a tree. So those balloons, when the inflammatory fluid fills in those, the oxygenation does not take place going from the nature to our body. We need the oxygen to go into the body, and those alveoli or the bags of or the balloons, they are the ones which have to be patent or open to have that function. So in this X-ray, when we read an X-ray, we divide that into upper zone, mid zone, and lower zone, and these are the 3 zones. Next slide, please. So on an X-ray, if this gentleman has been there, and as you can see, the first X-ray, it is normal. This patient who has had severe COVID progression slowly progressed from normal to second X-ray shows that he has got some moderate to severe symptoms. And third X-ray, as you can see, all those white things you see, the black thing on the first X-ray is actually the lung. That's how it should look like. Then slowly in the second X-ray, you see those white patches on both sides. And those are these alveoli or those bags or the balloons which are filled with inflammatory fluid and not allowing the exchange of oxygenation to take place. In the third one, it has progressed much more further. So in this time, in the third X-ray, you will see that the oxygen saturation, the pulse oximetry we talked about earlier on this platform, the oxygen saturation goes down further. And in that case, you will need ventilation or BiPAP or CPAP or high flow oxygen, which we have talked about in the past by oxygen concentrator. Next slide, please. Similarly, on the CT scan is a 3-dimensional view. It's not a 2-dimensional anymore anteroposterior. It's actually cutting the lungs into slides, where the first slide is like this, second slide is to the sides going back and forth called coronal, and third slide is cutting from the side. So basically you can look inside the lung. And as you can see in the upper section, this is mild to moderate lung disease. Those white patches you see, those are the affecting of these alveoli with this fluid filled component. And these are called ground glass opacities. Depending on how many sections of the lung is involved, they devise a pattern of scoring. But that scoring does not necessarily correlate with what the outcome is going to be, whether the patient is going to be hospitalized or going to the ICU or going on the ventilator. There has not been any correlation, and how they will do in future, there's no correlation. In the lower section, you can see this is intense, much more complicated, much more intense reaction by the body. Next slide, please. So in the upper section here, I also wanted to show one more pattern on the upper half of the slide. You can see the progression of 3 different patients in the first set who are presenting with COVID and their CT scan findings, as you can see. And the second section, again, there is a difference. So this is for doctor community, you can see that COVID presentation is not uniform on the CT scan. So making a diagnosis by looking at the CT scan findings is not necessarily the right way to do. In the lower section, I've also presented a couple of things
where the CT scan appears almost similar. There are many other problems in lung disease, and this is not a medical forum, so we'll kind of bypass that. The first section shows that you are in the lower half. First section shows that a immune reaction to any antigen, any allergen, any other protein which your body is reacting to, there's almost similar presentation as COVID, or any other viral infection can present similarly. In the second half, on the lower section, I have mentioned about showed some slides how a drug reaction will look like in the lung. And there is pulmonary fibrosis and NSIP and AIP, and I can go on and on. But idea being that the CT scan, number one, is not diagnostic of COVID. Number two, it is not even needed. And it's not going to show any future correlation with the disease process. So my take home message with this is that please do not go and get your CT scan unless it is required clinically or requested by the physician. That would be my take home message. When with this, I would let the esteemed faculty from SCB Medical College to talk more about lung complications in COVID. Thank you, Dr. Basant Mahapatra. Please take over. Thank you, Sanjay. Very nicely mentioned. लोकमाने जो एक्सरे सीटी स्कैन उपरे बहुत लोक भावंती जे हमर डायग्नोसिस टा करिया दरकार सीटी स्कैन एवरी दरकार. The way you told आमे जानि गो लोकंकर निश्चय क्लैरिटी आसीबो. आमे कोन डाक्टर माने कोन देखि करू आ बहुत बढ़िया. very good talk, Sanjay. तापरे मु I have the privilege to introduce our next speaker. He is very well known in Odisha. घरे घरे सब डाक्टर समझ जानी गलेनी. MR पटनायक कहले सब जानी गलेनी. कारण मु से मोर जिगरी दोस्त मनु आमे डाकू मनु एकाठी आमे करिछु पाठ पढिछु एससीबी रे एकाठी आमे बहुत गोली घटी करछु. से क्रिकेट खेलतो मु हॉकी खेलतबी. आ मनु we are so happy to get Professor MR Patnaik. He is currently the head of the department SCB Medical College रा. खाली सेतिक नुहे सी प्राय मु जहा सुनली सब जगह बहुत क्रिटिकल केयर पल्मोनरी डॉक्टर को ओडिसा रे से माने ही ट्रेन देम तांगर बहुत स्टूडेंट काम करचंती. तापर ही इज अ नेशनल एक्सपर्ट इन अ नेशनल टीबी इराडिकेशन प्रोग्राम रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा एडवाइजर नेशनल एक्सपर्ट तार स्टेट रो निश्चय एक्सपर्ट तामेन सी गोटे वेल नोन फिगर. तापर ही द हेड ऑफ द स्टेट टास्क फोर्स ऑफ टीबी आ ता कोविड पाई मध्य से आमर जेमती देवाशीष आमर कहले जे चीफ मिनिस्टर से टेक्निकल कमिटी अच्छी आ कोविड एडवाइजर ग्रुप रे अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रा. आ मु जो माने मोर निजर पर्सनल भी बहुत रोगियों कथा मु तांको कंसल्ट करी सेठी केमती अच्छी. आ से वर्तमान से आ गुटे जिंस करिसंती जोटा कि हम भाबी नथिलु. ओडिशा रे हम एससीबी मेडिकल कॉलेज रे डीएम कोर्स खोलचंदी फर्स्ट इन ईस्टर्न जोन. प्राय 10-11 इंडिया रे जगह अच्छी डीएम तामने ट्रेन करिवे हमर पल्मोनरी डॉक्टर को. एंड ए जो एते बहुत काम करचनी ता भितरे ओडिशा रे एते लोकन सेवा करचंती. आ ता भितर हम टाइम दे मनु आसीची. वी आर सो ग्रेटफुल मनु एंड वी थैंक यू फॉर सर्विस. प्लीज present your topic. You are mute, Manu. You are mute. Please unmute. Yes, go ahead. धन्यवाद बसंत सर. मो प्रथम रु कहबी जे हमर जो भाई माने अछंती ओडिया भाई डाक्टर भौणी माने से ओडिशा पई जहा करचंती हम माटी पई जहा करचंती डेफिनेटली इट इज ए प्राइड फॉर अस. एंड आल्सो आमे माने भी शिखिया कथा जे हमर स्टेट को केमती हमर लोक मान को इंप्रूव करिवा हमर स्टेट को केमती करिया. डेफिनेटली दिस इज अ ग्रेट थिंग यू आर डूइंग. थैंक यू वेरी मच. आउ गोटे मु कहबी एससीबी मेडिकल कॉलेज ओडिशा फर्स्ट माने रेडी हैला ये मार्च मास 1 मार्च 2020 सेतबळे मु एससीबी रो नोडल अफसर थिली प्लस स्टेट कमिटी थिली. तेणु प्रथम जितेबाला आम से रेडी हो बट विद माने 10-15 दिन भीतर जहाँ आम एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कला आम रेडी हो गलु. तेणु लास्ट इयर मुझे जहाँ डाटा कहबी जोटा समस्त डाटा कहबी आमर एससीबी रे 13,566 पेसेंट आम ट्रिटमेंट करूँ.
ସେଥିରେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ତମେ କହୁଥିଲ ବସନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ହଉଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଆମର 2.5% ଥିଲା से 2.5% माने जो पेशेंट को पेशेंट आसले जो मानकर ऑक्सीजन कम रहउतला सीरियस पेशेंट यूजुअली एससी मेडिकल कॉलेज को सीरियस पेशेंट आछंती तेणु जहार ऑक्सीजन कम रहला से मध्यरो 2.5% डेथ होतला अच्छा हमर कोविड रे तीनटा इंपोर्टेंट जिंस गोटे हला फर्स्ट हला टेस्टिंग देन ट्रीटमेंट देन थर्ड हला कंटेनमेंट ताले हमें काहा को टेस्टिंग करिबा सो आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओडिशा गाइडलाइन अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गाइडलाइन अच्छी जो मानकर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जार ठंडा ज्वर थिबो से माने निश्चय आसिकी टेस्टिंग करन आउ काहा टेस्टिंग करिया जो माने सारी जो माने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो माने धइसे होतबे से मान को भी टेस्टिंग करिया ता छडा जो माने कांटेक्ट हिस्ट्री आस्तिबे कोनोसी पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट कांटेक्ट हिस्ट्री आस्तिबे कि कौन सी हेल्थ केयर वर्कर कांटेक्ट हिस्ट्री आछंती कि समस्त को टेस्टिंग करिया नाही जदि जने हेल्थ केयर वर्कर कि एनीबॉडी कमिंग इन कांटेक्ट एटलीस्ट 15 मिनिट एंड 3 फुट भीतर जदि तांकर भी टेस्टिंग करिया देन कला ट्रीटमेंट आपण मान सब जानचंती ए कोविड पाई ट्रीटमेंट विशेष ट्रीटमेंट नाही तेणु जहां हमें करछे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देन अनदर इंपोर्टेंट इज द कंटेनमेंट आमे रोग को स्प्रेड करिया प्रिवेंट कर परिया जदि आमे जो माने पॉजिटिव हेले आम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रे आमे लाइक मास्क पिंदिबा 6 फुट दूर रहइबा सैनिटाइजर यूज करिबा ताहले डेफिनेटली आमे कोविड को निश्चय आमे प्रतिहत कर परिया तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर देवाशीष सर कहउतले जो कहउतले हमर जे दो डेल्टा म्यूटेशन मु से विषय कहबी टिके हम ओडिसा कोन काम करछु डेल्टा म्यूटेशन रे आज हमर भी गोटे मीटिंग थिला ए जो डेल्टा म्यूटेशन गवर्नमेंट गोटे कमिटी करछि जो थरे के वर्तमान हमें सैंपल स्टडी करी करी जे एक्चुअली ओडिसा रे केते डेल्टा म्यूटेशन हेई सैंपल हेई चंती आउ तांकर केते आउटकम कोन हेई जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रे केते आउटकम कोन हेई डेफिनेटली ताको हमें भी करूछु एंड मु कहबी जे ए किछिटा जदि आमे जानी प्रिवेंशन करि परिया जे मास्किंग अगेन एम्फासिस देबी जे मास्क पिंदिबा 6 फुट डिस्टेंस रखिबा सैनिटाइजर यूज करिया हाथ धोया सैनिटाइजर में कि सैनिटाइजर दरकार नै हम घरे जो साबुन अछि जदि हम साबुन रे धोइबा हाथ धोइबा फ्रीक्वेंटली प्रति 2 घंटा रे 3 घंटा थरे लेके धोइबा डेफिनेटली हमें ताको प्रतिहत करिया तेणु बर्तमान हमें मेन टॉपिक को जिबा मु बर्तमान इनवाइट करबी हमर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पात्र से प्रेजेंट करिवे केस विषय रे तापर केस सरला परे हमें तापर टेस्ट नेकी डिस्कशन करिया थैंक यू सो जितेंद्र पात्र डॉक्टर जितेंद्र थैंक यू वेरी मच सर गुड इवनिंग टू ऑल नमस्कार प्रथमे मु मोर अशेष धन्यवाद जणेबी ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका वेलनेस इंस्टीट्यूट for giving me this opportunity. Mo also धन्यवाद जणेबी प्रोफेसर एम आर पटनायक सर को डॉक्टर बसंत महापात्र सर को डॉक्टर देवाशीष रे सर को जे मते एई अपॉर्चुनिटी देइचंती एते ऑडियंस सामने रे मु आज किछि गोटे सीवियर कोविड पेशेंट विषय रे कहि परिबी प्रथमे मु पेशेंट विषय रे कहबी जे कि 31 वर्ष गोटे युवक कटक को आस्थिले जे कोविड आइसोलेशन आईसीयू एससीबी मेडिकल कॉलेज को आसीथिले तांकर असुविधा थिला ज्वर 10 दिन देह हाथ बथा 10 दिन आउ टेस्ट सेंसेशन तांकर कमी आइथिला 10 दिन किंतु मुख्य कारण से एससीबी मेडिकल कॉलेज कोविड आइसोलेशन आईसीयू को आसीथिले जे तांकर धइसे होउतला 2 दिन तो एठी मु कहबी जो पेशेंट मानकर धइसे आउ ज्वर खास ता संगरे थाए तांको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को और सेहि लागि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एडमिट होंती नेक्स्ट तो यही रोगींकर किसी कौन सी पुराना रोग नथिला किंतु सी बाय प्रोफेशन गोटे स्टेशनरी सप्लायर थिले हां आ ओकेजनल से स्मोकिंग करथिले एठी मु गोटे दिनस कहबी हां जने स्टेशनरी सप्लायर से यूजुअली बाहर तांकर काम पय जानती हां तो सेही समय रे से सब बेले मास्क सोशल डिस्टेंसिंग जोटा कि सामाजिक दूरता और
हैंड सैनिटाइजेशन ऊपर पूरा एम्फासिस करेंगे जदि से यही सब जिन प्रॉपर्ली करेंगे ताले तांको कोविड आक्रमण हबो नाही तो ई पेशेंट कर कौन कोविड-19 कंफर्म केस संगे कांटेक्ट नथिला बट स्टिल तांको सीवियर कोविड हला तो मे बी दैट से ताकर जो सोशल डिस्टेंसिंग किंबा मास्क किंबा हैंड सैनिटाइजेशन ऊपर प्रॉपर गुरुत्व देने थे तो मुझे समस्त को कहबी जे समस्ते जेतेबेले भी बाहर को जातु मास्क हैंड सैनिटाइजेशन आउ सोशल डिस्टेंसिंग टा मेंटेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड तो यही पेशेंट ताकर लोकल डॉक्टर को देखा करथिले जे कि ताकर रैपिड एंटीजन टेस्ट करथिले हमर टेस्टिंग रे रैपिड एंटीजन टेस्ट थाए गोटे आरटीपीसीआर टेस्ट थाए ताकर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव थिला जेहेतु से धइसे होतले से इमीडिएटली एससीबी मेडिकल कॉलेज कोविड आइसोलेशन आईसीयू को आसी के एडमिट हेथि नेक्स्ट स्लाइड आसला बेले सी ताकर पूरा कॉन्शियस ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस थिले एंड ताकर पल्स रेट जोटा कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर मेजर करथिलु ताकर 114 थिला और रेस्पिरेटरी रेट ताकर 40 थिला रेस्पिरेटरी रेट हमें किमते देखु पेशेंट रो छाती ऊपर तळ केते थर हुए गोटे मिनिट हमें प्राय समय दे कि पेशेंट रो केते थर छाती ऊपर तळ होची हमें ताको देख नॉर्मली सीवियर कोविड रे जेतळे रेस्पिरेटरी रेट 30 रु अधिका थाए हमें ताको सीवियर कोविड था कहू किंबा ताकर जदी बिना ऑक्सीजन रे ऑक्सीजन लेवल 90% रु कम थाए ताले हमें सीवियर कोविड कहू एई पेशेंट आसिला बेलको एम्बुलेंस रे आस्थिले आ ऑक्सीजन 8 लिटर फेस मास्क रे लागितला तो ता माने से ताकर निश्चित ताकर ऑक्सीजन लेवल बिना ऑक्सीजन रे बिलो 90% थिबो ता संगरे ताकर एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जोटा कि लंग्स रो सीवियर डिजीज हेले एक्टिव थाए तो सेडा सब एक्टिव थिला नेक्स्ट स्लाइड हमें देखिबा जेहेतु से सीवियर कोविड प्रेजेंटेशन हे के आस्थिले हमें संगे संगे ताकर एक्सरे करथिलु ए एक्सरे आपण देखि परिबे ताकर दी पट फुसफुस रो डाहण और बाह फुसफुस रे पूरा व्हाइट ओपासिटी अछि जोटा कि हमें कोविड निमोनिया कहू ए केस रे ताकर एंटायर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बोथ लंग्स रे कोविड निमोनिया हे कि अफेक्ट हेतिला नेक्स्ट पेशेंट को हमरो कंप्लीट टीम वर्क रे कोविड आईसीयू रे ऑक्सीजन विथ हाई फ्लो रिजर्व मास्क तापरे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर हमें देइथिलु कारण ताकर ब्रीथिंग रेट बहुत अधिक थिला हमें नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर माने मास्क लगे कि वेंटिलेटर को कनेक्ट करथिलु आउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल हिसाब रे ताकर कोविड रिलेटेड ऑल सपोर्टिव मेजर्स ट्रीटमेंट करा जायथिला धीरे धीरे 4 दिन परे ताकर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पड़ा जाय परथिला ओ ऑक्सीजन आ अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट रे पेशेंट कंटिन्यू कले 4 दिन 5 दिन परे ताकर रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग डिफिकल्टी टा कमिला और रेस्पिरेटरी रेट धीरे धीरे कमिला हां तापरे हमें ताकू विथ ऑक्सीजन 12 दिन परे तांको कोविड आइसोलेशन स्टेप डाउन को शिफ्ट करथिलु विथ ऑक्सीजन 4 लिटर पर मिनिट रे आ तांकर वाइटल्स ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन लेवल विथ ऑक्सीजन मेंटेन थिला आ हमें तांको कोविड स्टेप डाउन को शिफ्ट करथिलु कोविड रे हमें जानिचे जे समस्त हमें सुनिचे जे हमर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मोस्ट कॉमन सीआरपी और डी डाइमर जेहेतु पेशेंट जो पेशेंट मानकर 7 दिन इलनेस कंप्लीट हो जाए तांकर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ी थाए कारण से समय रे कोविड रा इन्फ्लेमेटरी फेज थाए तो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होची हमर वर्तमान सीआरपी और डी डाइमर ए पेशेंट रे हमें देखिचे जे सीआरपी तांकर पॉजिटिव थिला और डी डाइमर बहुत अधिक थिला ट्रीटमेंट बाबद रे से धीरे धीरे तांकर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कमी कमी आसिला नेक्स्ट एक्सरे 10 दिन हैला ट्रीटमेंट परे हमें देखि पार जे पुराना एक्सरे को कंपेयर करले तांकर लंग्स रो अपर जोन धीरे धीरे क्लियरिंग हलानी मिड जोन लोअर जोन रे निमोनिया एबे भी अछि नेक्स्ट तापर पेशेंट को हमें धीरे धीरे माने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जोटा कि ऑक्सीजन प्रोनिंग अवेक प्रोनिंग माने हमें पेशेंट को सब बेले कहू जे पेटे की सोइबे आधा घंटा तापर डाण पटे और बाम पटे आधा घंटा तो दरकार पड़े से घंटाटे कि 1.5 घंटा कि 2 घंटा मत प्रोलंग करें खाइबा परे हमें यूजुअली प्रोनिंग करने मना करूँ प्रोनिंग कर फायदा होची पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करिवो और जल्दी ठीक हेबे ता संगरे हमें इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जोटा कि रेस्पिरोमीटर द्वारा तांको कहू करिया पई जोथरे कि लंग्स को से इंप्रूव कर रिकवरी करिया पई आउ अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यू करिथाउ नेक्स्ट हमें पे देखि पर जे 22 दिन हला पेशेंट हम पाखरे अछंती धीरे धीरे तांकर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कमिची हमें ए वर्तमान 22 दिन रे एक्सरे हमें देखि परिबा छाती दीपट फुसफुस रो अपर और मिड जोन रे तांकर काफी क्लियरिंग हलानी किंतु लोअर जोन रे स्टिल किछि ओपासिटी जो अछि
एई ओपासिटीज किछि ओपासिटीज एटा फाइब्रोसिस रो सजेस्टिव अछि आउ ए जो फाइब्रोसिस हुए पोस्ट कोविड रे फाइब्रोसिस हुए यूजुअली समय अतिक्रमे विथ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एंड इंसेंटिव स्पायरोमेट्री धीरे धीरे ए कोविड फाइब्रोसिस क्लियर हो जाए किंतु बहुत कम पेशेंट मानकर जो मानकर बहुत सीवियर डिजीज थाए किछि रेसिडुअल फाइब्रोसिस रहि जाय थाए नेक्स्ट आमे देखि परछे ए पेशेंट को आमे डिस्चार्ज करलु विथ पोस्ट कोविड मैनेजमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट जोगो प्राणायाम करिया पय कहिलु आउ मसल एक्सरसाइज सब करिया पय कहिलु तो एई आउ ता संगरे आमे तांको मल्टीविटामिन आउ कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट देथिलु समय अतिक्रमे से धीरे धीरे एते बढ़िया इंप्रूव करि गले ते से हमर सब कथा सुनि कि फिजियोथेरापी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट योग प्राणायाम सब कला परे आमे वर्तमान देखुचे तांको एक्सरे रे कोनोसी प्रकार आ लीजन नाही तो एटा गोटे बहुत बड़ सक्सेस स्टोरी जे कि 31 वर्ष जने युवक एते सीवियर कोविड रे आसीथिले किंतु समय अतिक्रमे विथ प्रॉपर कोविड मैनेजमेंट इन आईसीयू एंड पोस्ट कोविड केयर and also pulmonary rehabilitation जो थे कि हमरो योग प्राणायाम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री मसल एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट विथ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देखि परछे पेशेंट बहुत सुंदर भाव में इंप्रूवमेंट करि जाउछन्ते and thank you very much for giving me this opportunity to speak here in this audience. Thank you Jitendra for your excellent presentation. Right, repeating. very good, very good. Dr. Jitendra Patel did very well. ए जो एते बढ़िया न्यूज देले समस्ते जो ओडिसा रु देखुचन देखंतु आसिले जनक लंग केमती डैमेज अवस्था को आस्थिला एंड डॉक्टर पटनायक डॉक्टर पात्र दे एते बढ़िया कले तांकू पेशेंट आल्सो लिसन टू तांकू सुनिले सब रिहैब कले जोगो मेडिटेशन कले करी तांको 31 वर्ष लोग तांका लंग्स पूरा क्लियर हो गला ही इज बैक टू नॉर्मल is the best news आपण देले हम बहुत खुशी and Dr. Patnaik you did so well you emphasize आपण कहि जो mainly social distancing sanitizing mask इवडा very important कारण कोविड भितरु न पसिले सिना हमें डॉक्टर पटनायक पाकु जुया जदी हम न पुरे दबा हमें काई ताम पाकु जिबा तो हमें we have to remember ए जिंस अच्छा तापरे मु बहुत धन्यवाद आपण दउची समस्त इवन सत्य बाबू समस्त इट वाज अ ग्रेट आई थिंक ओडिसा रे लोक माने बहुत खुशी हेतबे आपण भाग्य नै खाली गोटे मते हमर डॉक्टर रे हमर चेयरमैन मते कहिले जे बसुंदाई टिके आज टिके ब्रीफली टिके एकमो ऊपरे कहो कारण मु एकमो चिकित्सा रे इन्वॉल्व अछि हम हॉस्पिटल वन ऑफ द लार्जेस्ट एकमो सेंटर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर एकमो बेसिकली कोन कि एकमो केते जीव जेम से जितन बाबू कहिले जे प्रथमे ऑक्सीजन कमी जीव जो मु कहली लंग्स रे पानी जमी कमी गला परे तापरे धीरे धीरे आमे 90 टू 90 हे जीव 88 हे जो आमे कोन संगे संगे हॉस्पिटल ने टिके ऑक्सीजन दबु नाजल कनर अल्प दबु तापर हम चिकित्सा करिवु जदी न कमिला ता पेट्रोमेडी सो सब विभिन्न कलु न कमिला तापर आमे कोन करू ताकू एनआईवी हाई फ्लो दबु हाई फ्लो न हले एनआईवी दबु एनआईवी ओडे प्रेशर मास देकी ता लंग्स को जे पानी जमी ताकू एक्सपैंड करिवु ते ऑक्सीजन टा पसी परिवो जदी से फेल मारला देखलु जो जेम से कहले से लोकर बॉडी जीव रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल बॉडी गला लोक टायर्ड hi जाउची सो हमें कोन को विभिन्न पैरामीटर अछि लैब रे चेक करिवु जदी देखलु से रेस्पिरेटरी फेलियर आ जाउची ताको ब्रीथिंग ट्यूब देई हम वेंटिलेटर रे पुरेउ वेंटिलेटर विभिन्न प्रकार सेटिंग अछि जो जा फळे से लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी हमें करिवु को लंग्स जे हील हबो आ सब मेडिसिन दला परे कमी जदी वेंटिलेटर वर्सनिंग हला केते दिन चला हम देखुला होनी जो फाइब्रोसिस अवस्था आसिला सेते को हम डिसाइड करिवु जे प्रोबेबली आउ जदी किछि ऑर्गन सिस्टम असुविधा नाही आ ताहले लेट्स डू गो हेड पुट हिम ऑन एकमो कोन ता ना होची एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल माने देहर बाहरे ऑक्सीजनेशन माने ऑक्सीजन रक्त रे मिसाबा ता माने हम रक्त को देहर बाहर को आनी ऑक्सीजन मिसाबा रक्त भीतर थिबा अंगारकाम बा जो कहती कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रक्त को विशुद्ध करिवार ए जो प्रोसेस को एकमो कहा जाए एटा गोटे कृत्रिम फुसफुस कहले भी अत्युक्ति हेबो नाही एकदम एकमो जो आपन कहिची हार्ट फेलियर हम एकमो दउ लंग्स फेलियर एकमो दउ कारण हार्ट और लंग दी जन दी भाई बडा काम करे दरकार ऑक्सीजन पाई तेनु एकमो एक नुआ चिकित्सा नुए प्राय 50% हेलानी जदियो हमर ओडिसा रे इंडिया रे टिके पछरे अछु वर्तमान से मेसिन आछि किंतु स्वाइन फ्लू बेले एकमो बहुत से लाइफ सेव करछि यूरोप रे यूएस रे आ एटा गोटे चिकित्सा नु एटा गोटे
एटा मु कहि पारे गोटे जे कोविड को भलो कर दला भलिया चिकित्सा नुह एटा गोटे जीवन रक्षा कर तेणु जदि सब कहबे हम एकमो देई के हम भलो कर दियो सेटा भी नुहे तेणु डाक्टर पे छाड़ दबु एकमो केते दरकार प्रोफेसर पटनायक विल डिसाइड तांको टीम विल डिसाइड या दिस एकमो हमें करबो तेणु एटा होचे एकमो ऊपर मति कहबी जदि किछि क्वेश्चन आंसर हम दउ परे तापर मु आ गुडा आपन बढ़िया न्यूज देबी जे आपण वर्तमान जो सेंटर हम चारटा सेंटर अछि आ भीतर कोन हिची आमर जो अच्छी हेड आम ग्रुप रो मो सान भाई देवाशीष राय तांको विषय मु कहिची आ कहिकी माने सी दिन राति ही इज पुटिंग एते समय से दउचंती ता भीतर तांको सान भाई तार एबे तानो आमर कि दिन तळे ता सान भाई चल जाइथिले वर्षे तळे आमर सी ही इज वेरी डियर टू अस सोमू सत्यदीप राय सो तांको तार पई सी गोटे आमर सेठी जेते पेशेंट अछंती आमर जो ग्रोसरीज दिया होची $500 पर ईच पेशेंट फैमिली लेप्रोसी फैमिली को एससीबी मेडिकल कॉलेज रे एआईएमएस भवन से रहउची से अनाउंस करछन जे तांको एई वीकेंड रे देबे एकदम से पे मु देवाशीष को बहुत धन्यवाद दउची आ एई परे आपण माने समस्त जहां जहां जदी आपण माने देबे एई रोगी सेवा पे हमु कहिले हम ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहिले आमे बीता खुशी रे आपण ना रे सेटा डिस्ट्रीब्यूट करिवु आ लोक माने उपकृत हेबे वर्तमान मु एती कहि कि हमर जिबा नेक्स्ट सेशन को नेक्स्ट स्लाइड रश्मि there bas next slide will be our question answer या वर्तमान क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो भाई thank you Rashmi thank you everybody एबे क्वेश्चन आंसर देखिला बेले मु गोटे समस्त को जणैवा को चाहूची हमर जो एते काम आपण सब देखुचंती मेन तो सुनिले देवाशीष भाई किंतु जो टेक्निकल सबु जिंस राती अनिद्रा हे उठी बसी छुआ का घर कथा सबु बुझी आम सान भणी रश्मि सेटा सबु सक्सेस करची नले डाक्टर आ टेक्नोलॉजी हाथ रे चलंतीनी एका संगे मु टिके ऐड कर देबी थैंक यू समस्त को फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन आ रश्मि हमर राति दिन से लागि छी हम संगे हमर सेशन प्रेजेंट करे सो स्पेशल थैंक्स टू रश्मि एंड फैमिली नॉट ओनली रश्मि तार हस्बैंड भी हमको हेल्प करची तार लिटिल छुआ नी छुआ हम पई किनी फंड रेजिंग करची सच ए आइडियल फैमिली एंड यू आर ए रोल मॉडल फैमिली फॉर ओडिया कम्युनिटी रियली अप्रिशिएट दैट भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वी डोंट या सो अबिका जाइके हम लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमरा ऑलमोस्ट हे गलानी अराउंड 1 hour 10 minutes हे गलानी सो क्वेश्चन एंड आंसर निहार यू आर देयर हां भाई मो अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन जूम रे अछि कैन ए पर्सन विथ मल्टीपल वाल्व रिप्लेसमेंट टेक कोविड वैक्सीनेशंस ये क्वेश्चन भारी भलो क्वेश्चन कहना ये क्वेश्चन बहुत लोग हम पचार चंती जे हार्ट पेशेंट नहीं परियो कि नहीं वाल्व रिप्लेसमेंट हेछि कि नहीं परियो स्टेंट नहीं परियो तीटा को मैं कवर कर देबी जदि जनकर वाल्व रिप्लेसमेंट हेछि से माने साधारणतः विटामिन के एंटागोनिस्ट एंटीकोआगुलेंट नौचंती अर्थात आइदर एसिट्रम और वारफारिन ए जदि हम तांकर पीटी आईएनआर टा करिया दरकार जदि आईएनआर 3 ऊपर अछि ताले से माने नेबे नाही डोज एडजस्टमेंट करिकि आईएनआर टा 3 तळ आनिला परे नेबे जदि 2 तळे अछि एवं तन डेफिनाइट नेबे यदि 2.2 रु 3 भीतर अछि एवं अल्प दिन भीतर टेस्ट हेइ नाही ताले आउथरे टेस्ट करिवे यदि टेस्ट रे से माने 2 रु 3 भीतर रहिला ताले डेफिनाइट नेबे एवं नेला इंजेक्शन नेला परे तो इंजेक्शन साइट टाकू 2 रु 3 मिनिट प्रेस करी रखिबे सो दैट लोकल हिमाटोमा हबो नाही ता सेठी लोकल स्वेलिंग लोकल ब्लड जमाटो आंदियो नाही आ एठी स्टेंट से बहुत लोक पचार चंती जो माने स्टेंट नै चंती से माने आइदर एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल बा दी टैंक बा टिकाग्रल एउडा नौचन तेणु से मानकर किछि असुविधा नाही से माने नै परिबे ओनली से लोकल साइट को प्रेस करी रखिबे प्रथमे कोआ होतला जे दिने दु दिन बंद करिया ए दिने दु दिन किछि बंद करिया दरकार नाही एवं से माने नै परिबे एतरे आ जो न्यूअर एंटीकोआगुलेंट जोटा कि हमें कहूचे नोआक्स बोली जोटा कि हमर डाबिगैट्रॉन रिवारोक्साबान एपिक्साबान जोटा दिया होची नॉन वाल्वुलर आर्टेरियल फिब्रिलेशन जोटा वाल्व रिप्लेसमेंट न होई आर्टेरियल फिब्रिलेशन सेठी गोटे अछि सेठी से माने नै परिबे किंतु गोटे डोज से माने ओमिट करिवे तेणु वैक्सीन नबा सेफ हमु के केयरफुल होबा पड़ो केयर नै कि हमु करिया दबा पड़ो इंजेक्शन
Thank you, Satya bhai. And next question. I've got a question bhai achi Zoom re. Sir, my grandmother now free from COVID-19, but why saturation falls sometimes in night below 91? Manu bhai ki Dr. Patra. Manu bhai, are you mute? Muted. Muted ଅଛି ହଁ ମନ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଯଦି ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିବ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସିଓପିଡି କି ଆସ୍ମା ଥିବ ସେଇ କେସରେ ଆମେ 88 ରୁ 92 ଭିତରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି 88 ରୁ 92 ସିଓପିଡି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସିଓପିଡି ପେସେଣ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ ଯଦି 92 ତଳକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ କହିବେ ଯଦି ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଓରି ହବା କଥା ନୁହେଁ ବିକଜ ସମଟାଇମ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ କୋଭିଡ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି ଯୋଗୁ ହାଇପରଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହେଇକିରି ଅକ୍ସିଜେନ ବି କମି ଯାଇଥାଏ ଟିକେ ତେଣୁ ସେଇପରି 94 ଏଇ ଏଜରେ 82 88 ରୁ 92 ୱେଆର ଦ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ Please mute. हाँ देवाशीष मोर गोटे सत्य बाबू ପାଇଁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୁଁ ପାଇଲି am I more likely to get a COVID-19 if I have a pre-existing heart condition? And second part of his question is, are symptoms of COVID-19 different for people with heart disease? Satya, can you answer? এটা ভালো কোশ্চেন মু সেকেন্ড পার্টটা আগে আনসার করছি তারপরে ফার্স্ট পার্ট কু ଯିବା एक्चुअली कोविड-19 ର सिम्पटम हार्ट रोग বা অন্য কোনস রোগ ପାଇଁ ଅଲଗା ନୁହେଁ এই সিম্পটমটা ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ କୋଭିଡ ସିମ୍ପଟମ ଏକା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଜଣଙ୍କର ଇସ୍କେମିକ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ଅଛି ବା ହାର୍ଟ ଫେଲର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ-19 ସିମ୍ପଟମ ବେଳେ ହାର୍ଟ ସିମ୍ପଟମଟା ବି ଅଧିକା ହୋଇପାରେ ସେଟା ଆମେ କେୟାରଫୁଲ ହବା ଦରକାର କାରଣ ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ହାର୍ଟର I mean डिकंडीशन ही अधिका हेई पारे कि सिम्पटमटा प्राय समान साधारणतः जो सिम्पटम आमे जानिचे ज्वर बा आजिकल जो तंटी खसखस काश धई सई ता छडा टेस्ट पळेबा एवं स्मेल पळेबा ऑल दी थिंग्स एका सब गुडाक किंतु फास्ट पार्ट जोटा थिला जे एमानकर अधिका अछि कि चांस सेटा एक्चुअली आमको केयरफुल रहा पड़ो जमी जोटा को आपण माने समस्त कले केमिति इन्फेक्शन न हो जदि से यूजुअली जो मानकर हार्ट डिजीज अछि से माने अदर कोमोर्बिडिटी माने अन्य जिंस अछि माने डायबिटीज थिबार चांस अछि से माने किडनी प्रॉब्लम थिबार चांस अछि से माने वयस्क होबार चांस अछि माने सीओपीडी होबार चांस अछि मल्टीपल रिस्क फैक्टर थिबो से मानकर डेफिनेटली होबार चांस अधिका एवं जदि हेला ताहले प्रोग्नोसिस बा तार रिजल्टटा भलो न खराब अन्य मानक तुलना रे खराब सेइतमे हमको बेसी केयरफुल हो पड़ियो कि जनकर जन खाली ब्लड प्रेशर अच्छी कि अन्य कोन प्रॉब्लम नहीं तार अधिका हबार चांस नहीं एवं ब्लड प्रेशर सहित अदर एसोसिएटेड कंडीशन थिबो सिम हार्ट जोटा कहले हार्ट फेलियर थिबो हार्ट फेलियर कोन कि देयर इज कॉम्प्रोमाइज स्टेटस से जगह रे डेफिनेटली हबार चांस सामान्य अधिक किंतु जदि हेला ताले असुविधा हबार चांसटा रहउची तेनु सेमानु बेसी केयरफुल हो पड़ियो यदि जनकर एबे गोटे स्टेंट हेची गोटे हार्ट अटैक स्टेंट हेची ता पे किछि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नेबे कि पैंडेमिक रे ने दैट सेटा होची जदि स्टेंट लगा जाईची ताले हमको सबटू इंपोर्टेंट होची सब मेडिसिन ता कंटिन्यू करियो पड़ियो तो से डॉक्टर पाखु आसी परिबो नाही किंतु टेलीमेडिसिन जरिया रे हो बा टेलीफोन जरिया रे हो निश्चय तार फॉलो अप रहिबो एवं मेडिसिन कंटिन्यू करिवो जदि डॉक्टर परामर्श बिना कोनोसी मेडिसिन डिसकंटिन्यू करिवो नाही कारण एथरे जो औषध दिया होची हमर टिकाग्रालर हो बा एस्पिरिन हो क्लोपिडोग्रेल हो सेउडा का ब्लड थिनर काम करे जोडा कि हमर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज रे एंटीकोआगुलेंट दिया होची कारण कोआगुलेशन बेसी होची सेटा डायरेक्ट प्रोटेक्ट करिवो तेणु आम से अधिक माने हमको मेडिसिन कंटिन्यू करिया पड़ियो किछि बंद करिया दरकार नाही जदि बेसी पैंडेमिक टाइम जाई होने डॉक्टर पाखु न जाई परी घरे सब मेडिसिन कंटिन्यू करंतु डॉक्टर को टेलीफोन जरिया रे आजकल टेलीमेडिसिन सब हॉस्पिटल रे टेलीमेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल ओडिसा रे तेणु से टेलीमेडिसिन द्वारा आम संगे भी कांटेक्ट करि परिबे एसीबी रे ऑल इंडिया टू सबडे भी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी अछि थैंक यू सत्यवाद मोर गुड क्वेश्चन अछि मु संजय डल्लास टेक्सास रु कहूची सर नमस्कार राउतरा सर
सर मोर दुईटा क्वेश्चन अछि गोटे बसंत भाई को आपण फर्स्ट आपण को अछि आपण को क्वेश्चन हला सर हार्ट और लंग्स भितरे गोटे मु कहूछ 18 रु 45 इयर्स भितरे जने पर्सन रो कोउटा फास्ट डिटोरिएट करिवो आ जने तो लॉकडाउन रे बे अछि से कोन जिंस एक्सरसाइज करिवो कोन करिवो कि सेटा इम्यूनिटी इंप्रूव करिया पई एटा जोटा आपण बहुत बढ़िया क्वेश्चन कोउटा आगे हबो केना हमरो तीनटा फेज अछि गोटे वायरल फेज जोटा वायरल रेप्लिकेशन बढ़ौछि तापर यूजुअली पल्मोनरी फेज जोटा लंग्स अफेक्ट होछि थर्ड फेज रे यूजुअली हार्ट अफेक्ट होछि किंतु बेले बेले जदी सिवियर इन्फेक्शन ने फर्स्ट फेज रे हार्ट अफेक्ट करि पारे जोटा कि मायोकार्डाइटिस हेई पारे सेकंड फेज रे जतले लंग्स अफेक्ट करिवो तार ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम अछि ताहाले भी हार्ट सेही समय भी हार्ट फेलियर को जाई पारे जनक आगरु कार्डियक प्रॉब्लम नाही हार्ट प्रॉब्लम नाही यूजुअली सेठी लंग्स टा आगे अफेक्ट हो पछरे हार्ट अफेक्ट हो जतले हमर साइटोकाइन स्टॉर्म हबो जतले इन्फ्लेमेशन चारियाड हबो सेतले हार्ट अफेक्ट करिया चांस अछि आउट जेटा कहले जदी लॉकडाउन वाले जाई पारु नाही ताले को प्रकार एक्सरसाइज करिवो एटा मु जानिया दरकार जदी जनकर कोविड इन्फेक्शन हला फर्स्ट माइल्ड मॉडरेट सिवियर आ गोटे एसिम्प्टोमेटिक ये चारटा समस्त जानिया दरकार कारण एसिम्प्टोमेटिक माने बेले तार किसी सिम्पटम नाही से टेस्ट करि दो पॉजिटिव हला बा कोनोस गोटे पॉजिटिव पेशेंट संस्पर्श आसी कि से टेस्ट करला पॉजिटिव हला कि सिम्पटम नाही एटा एसिम्प्टोमेटिक इधर किछ करियार नाही जहा केयर नबा कथा माइल्ड सिम्पटम तीनटा दिन से आपण मन रखदु गोटे हला एसिम्प्टोमेटिक बा अल्प कि सिम्पटम ज्वर जदि थिबो ज्वर 100 रु कम रेस्पिरेशन रेट 18 रु 24 भीतर थिबो एवं ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 और अधिका थिबो तने एटा माइल्ड मॉडरेट केतल कहबा जदि ज्वरटा 100 प्लस थिबो एवं तार ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 रु 93 भीतर थिबो एवं रेस्पिरेशन रेट 24 टू 30 भीतर थिबो एटा मॉडरेट तो मॉडरेट माने हमें पोटेंशियली दे शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर एंड सिवियर जोटा मोर देन हार्ट रेट सॉरी रेस्पिरेशन रेट 30 रु अधिका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 रु कम 89 और लेस एंड ज्वर जोटा कि विथ राइगर चिल चेस्ट पेन ब्रेथलेसनेस एगुडा थिबो सेत्रा लॉकडाउन हम अपेक्षा न करी जोनोसी जे कोनोसी मते हमको हॉस्पिटल पहुंचिया कोछि केवल जब माने एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड थिबो से माने सेफली डिफरेंट कोविड मैनेजमेंट करी घर रही परिबे यदि कोविड पॉजिटिव इनिशियल फेज रे से माने कोविड एंटीवायरल ड्रग नेबे एवं जदि मॉडरेट रे बर्तन एबे तो हॉस्पिटल ले बेड खाली हेलानी किंतु मॉडरेट फेज रे सेतले कराव जते हॉस्पिटल बेड मिलनतला सम पेशेंट कैन बी ट्रीटेड एट 4 मंथ्स घर भी ट्रीटमेंट हेई परे जो मानक ऑक्सीजन सैचुरेशन टा मेंटेन करूची 90 तळ को न जाउची जदि से माने पड़े की सोइले बा प्रोनिंग जोटा हम कथा होतले पेटे की सोइले जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ुची ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिया द्वारा ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ुची ताले हम जाई परे सेटा जोटा डॉक्टर पटनायक कहतले जे चालिले यदि बढ़िला त डेफिनेट भलो चालिले जे कमिला डेफिनेटली आपन संगे संगे नबाउ पड़िबो आ गोटे सोइले जो क्वेश्चन थिला सोइले होतला जोटा एटा एक रेस्पिरेटरी ड्राइव कमी जाउची यदि कार्डियक पेशेंट थिबो से माने सोइले धई सेबे सोइले कासिबे किंतु अपराइट पोजीशन रे से माने कर इजिली होबो नै दीटा पार्ट टाको हमको केयरफुल होबो पड़िबो थैंक यू सर बसंत भाई नमस्कार आपन को वीडियो मु बहुत जगह रे शेयर करथिली हम बहुत क्वेश्चन आसला सो हमें जानि छै इक्मोटा हमर लास्ट हला ब्रह्मास्त्र गुटे कहंती आपन टे स्टैटिस्टिक्स वाइज रे कहिबे कि कोन केते बेले हमें जीवा इक्मो को आ तार तो मोर्टालिटी रेट बहुत कम हमें जानि छै एबे भी हमर आईपीएस जन देवाशीष पाणिग्रे चली गले तो ता विषय टिके आपन आ 2 मिनिट कहिबे 1 मिनिट कहिबे किछि वेल कहूची ब्रीफली इक्मो यूजुअली हमें कोन करू इक्मो हम जेम कहिली जदि हार्ट रो कंडीशन पे हार्ट फेलियर हैला पे आप में एक्मो कंसीडर करू लंग्स भी फेल हैला एक्मो कंसीडर करू एक्मोटा गोटे कोनोसी चिकित्सा में गोटे रोगर हार्ट फेलियर पे एक्मोटा जे हार्ट को भलो कर दो नाही सेमती लंग्स को भलो कर नाही कोन होउची एक्मो कले हमें टाइम टू हील हमें जदि 10 दिन रखि देलु एक्मो रे टाइम टू हील मोर आईसीयू रे मोर दीटा पेशेंट वेरी यंग 25 अराउंड 28 भितरे दीटा पेशेंट मु काली देखले ऑलमोस्ट 6 वीक्स हमें एकमे रखिजु कारण तांकर सिवियरली लंग डैमेज हेची कोविड रे हमें सब ट्राई कलु वेंटिलेटर रखिलु तापरे ट्रैकियोस्टोमी भी करिचु तापरे हमें एकमो करी तांग रखिचु आ से माने वेटिंग फॉर लंग ट्रांसप्लांट सेटा किन एकमो केते करे एटा वेरी डिफिकल्ट डिसीजन हमें सब इवैल्यूएट करू हम गोटे कमिटी अछि हमें हम कमिटी रे मु जण आईसीयू डॉक्टर अछि जण कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजी अछंती जने सर्जन अछंती जे एक्मो केमती करिवे ने एक्मो जेन मु कहली डायलिसिस जेमती होयनी किडनी रे से एक्मो को बाहर को रक्त आनी
एक्मो मेसिन रे ऑक्सीजन पुरेबा आर कार्बन डाइऑक्साइड काढी देले ताको विशुद्ध हो ता भितर पुणी एक्मो मेसिन पुणी हार्ट को पुरे दबा हार्ट पंप कले चारिआडे बुलिबो बुली पुणी ऑक्सीजन जोगेबो पुणी नहीं आस जदि लंग्स बंद हो गला से जो डी ऑक्सीजन रे ब्लड जोटा विशुद्ध जो दूषित रक्त आसीबो लंग्स पुणी फेरी जीवो सेम दूषित होई तेणु सेटा काम दबनी सेटा सबु ऑर्गन को धीरे धीरे अफेक्ट करबो ऑर्गन जो कहंदी मल्टी ऑर्गन फेलियर हबो बिफोर दैट हमकु टाइमली डिसीजन न पड़िबो केते बे एकमो तेणु एकमोटा आमे स्पेशलिस्ट मान छाडदा मु केवल कहिली काइना आमे लोकंग भितर गोटे रहउची हे एकमो एकमो ओडिसा रे चहल पड़ची किंतु एकमो पे आपण माने व्यस्त हबा कथा नो छाडी दबा कथा हम जेमि डॉक्टर पटनायक ऊपर तांको ऊपर टीम छाडबा कथा से कहबे केते बे एकमो दरकार यस त आपण पेशेंट हिसाब आपण कहि पारे कैन यू डू एकमो यस आमे किंतु एकमोटा होची गोटे लाइफ सेविंग मेजर इट्स नॉट ए डेफिनेट किंतु मोर्टालिटी हिसाब रे कहले आमे देखु कोविड रे मु कहबी 50% मोर्टालिटी अच्छी किंतु आमर जो माने अछंती एकमो रे तेणु आमे जो ताकू जदी ठीक समय रे ट्रांसप्लांट न करिबा तेणु से लोक बेसी दिन रहिबेनी हार्ट फेलियर यूजुअली एकमो कले मोर्टालिटी बहुत कम लोक मरंती कारण आमे हार्ट पे अलगा सर्जरी करिवु किंतु लंग्स रे टिके डिफिकल्ट हुए तेणु लंग्स रे आम सेंटर रे अवश्य मु आम सेंटर रे 60% प्लस अच्छी एकमो माने सर्वाइवल किंतु बहुत जगह रे अप एंड डाउन मु कह एवरेज 50% मे बी मनु पटनायक कैन pitch in that I think what is the CDC report कहि दिला जो सेंटर रे एक्सपोर्ट हार्ट नांती द एकमो करबा इज मोर डेंजरस देन एकमो न करबा सो यू रिक्वायर सम स्पेशलाइजेशन से स्पेशलिस्ट थिले जो माने काम करछन परफ्यूजनिस्ट तेणु भल दरकार हमको एकमो करबा को मैनेज करिया को हैंड दरकार तेणु जो सेंटर रे जते नुवा करी अछि मशीन आछि करूचंती so सेतरे मोर्टालिटी बेसी बढ़ी दिबो can I say something the recent data has published from Washington and London about I think about 6 months ago and they find out what is the statistics because the data which is published about 4 years ago the ECMO the outcome the ECMO after the disease sir tike odia re kahibe kaina iti majority population amar odia it's very difficult to understand English I'll try to do my best okay na kon hochi ki if you the 4 वर्ष तळे the what are the statistics देइछंती between London and Washington they have find out the criteria the after ECMO the outcome is not very good माने outcome ta बेसी भलो नय किंतु recently they have seen all the COVID patients jete COVID patient ko dekhijanti even they have put in the ECMO the outcome survival rate is much better and their outcome is much better if they refer but jedi the patient ko is if you refer early when if you early stage jedi refer kar debe the outcome is much better if the 75% have some of the patient the 70 outcome is 75% survival. Thank you, Ajit bhai. Your sweet ODIA. You better. I'm sorry. Better than Vijay Thomas. I have a question for Jyoti. I think I got a text here. Na COVID, I'm day 3. Or a palpitation hochi, chest re betha hochi. Kon karibi? Cardiologist ko jibi na hospital jibi? What should I do? So. How old is the patient and if there is jodi agru kichi pre-existing heart condition achi I will take it more seriously somebody who had a stent blockage jodi agru kichi problem achi heart ro then first thing mu pachari bi jo chest pain ta hochi even if covid positive heichi chest pain ta hochi tome kichi kamo kale chest pain hochi na basla bele chest pain hochi oxygen saturation kon so chest pain hobar main reason goda like lethal jota ki can cause problem like heart attack blood clot in the lungs those are the things I'll think about so oxygen saturation is very important tapare heart rate kon अछि जदी से जो pulse ox रे देखि परिबो oxygen saturation heart rate that those are very important to determine तम hospital जीवो ना घरे रहइबो ताचे कोन करिवो से लोक ओडा कोन करिवो से hospital जीवो ना तो डॉक्टर को डाकिबो फर्स्ट कहिबो
चेस्ट पेन टा केतेबेला होची सडनली आसी गला चेस्ट पेन की हार्ट रेट पूरा हाई ही जायची आउ ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी जायची रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म से केस रे जदी चेस्ट पेन टा होची किछि कला बळकू that is also important कारण maybe there is blockage causing this problem and also जदी आगुरु किछि कंडीशन अछि how old is the patient diabetes अछि ना नाही high blood pressure अछि ना नाही सब जिनसोडा कंसीडर करिकि call the doctor then doctor will decide what to do next. Thank you Jyotish for the nice answer. I got a question asla Facebook live re eta for pulmonary anybody from pulmonary can take a person how can I know we have oxygen cylinder at home and how can I know when to increase or decrease the oxygen flow and is it dangerous if we give higher flow than required? Yes, Nouchi. Suppose a condition I will tell एथे आमे बर्तन अवेलेबल अछि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जति से घरे रहउछि माने तार लो फ्लो ऑक्सीजन दरकार होउछि 5 लीटर टू तळु दरकार होउछि तेनो एथिरे मु रेकमेंड करिवि जे गो फॉर द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोथरे की रिफिलिंग माने दरकार नाही से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन रूम एयर टाइम देला टाणी देकरी तापरे ऑक्सीजन अप टू 5 लीटर पर्यंत दरकार होची जदि मोर दरकार होची ताको ही एडमिशन हबाको पड़िबो तेनो बिकॉज ऑक्सीजन मिलिया भी डिफिकल्ट बर्तमान देखिले मझिरे जो ऑक्सीजन ब्लैक हैला जेतरे मिलिया भी डिफिकल्ट एंड ऑक्सीजन केते ऑक्सीजन अछि केते समय जीवो ताको भी कहिया डिफिकल्ट होबो तेनो बेटर मु रेकमेंड करिबि जे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से टाइम रे यूज करो जदि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ना नाही ताले हॉस्पिटल के एडमिशन हो. Thank you Manu bhai. Devashish bhai, can I have a question for Professor Patnaik and Dr. Patra. Can I pitch in now or yeah okay Yeah. So Professor Patnaik and Dr. Patra also I think I need input from Dr. Agrawal. The D dimer level, so what's the number you will suspect that pulmonary embolism is happening in a patient who is have COVID pneumonia? Is there a cutoff level you will recommend CTA or you just because the symptoms could be the same? Right, एथरे मु कहबी मोर गोटे एक्सपीरियंस कहउची जतो प्रथम कोविड हैला 2020 रे सेतो बेले समस्त ए जो डी डाइमर सीआरपी फ्रॉम डे 1 रो माने वायरल स्टेज रे समस्त करतले सेथिरे गुडे गुडे लैबोरेटरी रे कोन होची स्टैंडर्डाइज न होई कि आपन को सीआरपी 2 थिबो देखला को डी डाइमर हैला 1700 1800 एंड पेशेंट रो सिम्पटम्स नै तेनो एई 1700 विल नॉट गो बाय द न्यूमेरिकल्स तेनो आमे देखिबा जे क्लिनिकल कंडीशन कोन अछि गोटे इन्फ्लेमेटरी स्टेज रे अछि ना नै जदि सीआरपी इंक्रीज करछ नै एंड तारो किछि कोमोर्बिड कंडीशन अछि सेतो बेले सेही अनुसार जाय कि हम तथापि गोटे कट ऑफ लेवल कहबी 1000 ऊपर हेले आमे डेफिनेटली विल बी सीरियस. थैंक यू सेटा बहुत बढ़िया कथा कहले. आई थिंक ज्योति गॉट द आंसर. आमे भी जेटा कहतुले हमको माने गोटे कॉमन एग्जांपल हमर एठी लोक माने हमर व्यस्त होई कि लोक माने तांगर रिलेटिव करो लैब रिपोर्ट और कैट स्कैन मोप को आसी जाउची इवन विदाउट लेटिंग अस नो. एठी आपण मन जानिबे कैट स्कैन इज नॉट द डायग्नोस्टिक टेस्ट. आपण डॉक्टर से परामर्श करंतु फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एक्सरे करंतु जो दरकार पड़ला अननेसेसरी लैब्स करंतु जति कि लैब्स आपण धरि के बसिबे कैट स्कैन धरि के बसिबे आपण सेति की बोझो मुंडा पर की हेल्प करना दी फैमिली को. So please calm down. देवाशीष सर मु इथे कहबी इंडिकेशन ऑफ द आपनकर जो होउची सीटी स्कैन सो आमे नेचु जति 10 दिन परे जति फीवर रहउची persistence of fever after 10 days then we will go for the CT scan number 1. Number 2 hela jati intractable cough hela intractable cough hela 8 day 10 9 day 10 days tole also CT scan kariya and jati patient jauchi ICU ku bhartiya pai as per the amar guideline setole ame CT scan kariya. I think e tinta criteria mu joda fix करछि सेटा डॉक्टर को एडवाइस फॉलो करी कि अपन करो मन इच्छा को करछन मन इच्छा करंतुनी कारण हमर जानि छै जे हमर 80% कोविड पॉजिटिव पेशेंट का किछि ना किछि सेडो रहिबो जदि सीटी करिवा हमर 80% पेशेंट कर पॉजिटिव किछि सेडो रहिबो तेनु प्रथम रु कले दैट आल्सो समटाइम्स हमको गोटे रॉन्ग रास्ता को नहीं जाए
एक लोकर मेंटाली मोर फाइब्रोसिस हेगला बर्तमान लोकंकर कोन मुंडे रे पछी फाइब्रोसिस पछी बट एई फाइब्रोसिस हमर जो आगुरु देखितलो H1N1 बेले इट इज ए रिवर्सिबल फाइब्रोसिस मु तो टर्म टा कहे सो कॉल्ड फाइब्रोसिस नॉट फाइब्रोसिस इट इज ए सो कॉल्ड फाइब्रोसिस बिकॉज़ आपण कोन देखिले जो पेशेंट रो सेमति केते पेशेंट अछंती जो लॉट ऑफ पेशेंट मु सेमान को कहे 3 मास पर यदि सिम्पटम नाही 3 मास पर रिपीट सीटी करिवो and only ताको एडवाइस करे no drugs only खाली योगा प्राणायाम this is my message from the thousands of message मोटो जाई छी 8 वर्ष मो ए ट्रीटमेंट करी छी योगा प्राणायाम आउ एक्स-रे और सीटी स्कैन आफ्टर 3 months if there is no symptoms or post covid अच्छा common question जाने पटकी is COVID pneumonia is more deadly than any other pneumonia and can it damage my lungs permanently? ODIA एटा हो गोटे क्वेश्चन ODIA क्वेश्चन ला कोविड निमोनिया टा कोन इट इज ए वायरल निमोनिया आमे जो सिटी रे पचार सिटी जो पिक्चर पाउचे दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए वायरल निमोनिया कोविड निमोनिया से वायरल निमोनिया H1N1 रे पारे H1 एटा भी जो टाइम रे सीजन टाइम H1N1 टाइम रे भी सीजन टाइम जदी तमे एई निमोनिया रे जदी टेस्ट करबो H1N1 विल बी पॉजिटिव तेनो ए जो पिक्चर दिया होची सब कोविड लाइक वायरल निमोनिया रे फाइब्रोसिस एंड्स एंड स्क्विलिंग जो हमर गोटे निमोनिया रो तीनटा जिंस आउटकम अछि गोटे होची कंप्लीट हीलिंग बाय स्कैरिंग और कार्निफाइड निमोनिया this is the radiological terms in the as a healing state so gude case re complete healing he jibo au gote case re amara scarring roi jibo ame dhara tuberculosis case amara ete patient tuberculosis hoji taker tuberculosis disease healed by the scarring taker भी scarring रहउ छथि से माने ame loko jon loko gote lungs pura tuberculosis नष्ट जाउची they are living 80 years सेथरे किछि प्रॉब्लम नहीं तेणु आमे कहीं भाबिया डरिया जे ए हमर फाइब्रोसिस रे हमर आगो असुविधा हबो तेणु गोटी आंसर होची जदी पेशेंट निमोनिया रे डेवलप करचंती द पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इज द आंसर सेही भाई बर्तन आम डिपार्टमेंट ओडिसा रा आम डिपार्टमेंट रे एटा हेची माने गवर्नमेंट करची एटा पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर सो फॉर दिस सेंटर पल्मोनरी मेडिसिन द मैनेजमेंट फॉर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट पाई गोटे कराइची आमे चाहूचो एसी मेडिकल कॉलेज रो ये को गोटे हाई लेवल पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर करिया पाई इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सो सेही भाई गवर्नमेंट crores of rupees रो मशीन सैंक्शन करिची तेणु ऑल लंग फंक्शन हाई एंड लंग फंक्शंस आल्सो एटे हबो तेणु निमोनिया रे सब निमोनिया फाइब्रोसिस हो ता माने नु जो किछि निमोनिया कंप्लीट क्लियर हेबो किछि निमोनिया फाइब्रोसिस जो निमोनिया रे हमर वेंटिलेटर पड़थिबो इंट्यूबेशन के वेंटिलेटर थिबो एंड आमे एक्स-रे देखिबा सेते सिस्टिक चेंजेस थिबो सिस्टिक चेंजेस इट इज वेरी इंपोर्टेंट सिस्टिक चेंजेस थिबो सेही केसेस गुडा रे होची इरिवर्सिबल एंड सेही जो एंड स्टेज केसेस रे हमर आगु दरकार पड़े लॉन्ग ट्रांसप्लांट जदि पेशेंट भलो रहउची तने सेही केस रे लॉन्ग ट्रांसप्लांट आई थिंक आई एम क्लियर इन दैट इज very good very nice भाई गोटे क्वेश्चन अछि फेसबुक रे अभिजीत महांती पचारचंदी ऑक्सीजन सिलिंडर्स आर बेटर और कंसंट्रेटर्स आर बेटर फॉर पोस्ट कोविड पेशेंट संजय अग्रवाल फॉर संजय अग्रवाल I think I will request Jitendra. Jitendra is sleeping, so I will request Jitendra. Yeah, why don't Jitendra, Dr. Patra, why don't you take this question? Yes, sir. I would like to answer this question. Go ahead. So, oxygen concentrator is basically it concentrates. माने हमरो room air को concentrate करके ताको 5 liters पर oxygen दे परिबो. It is a concentrator. It is not 100% oxygen. So, जो patient मानकर हमरो low flow oxygen requirement माने below 5 liters or 4 to 5 liters जो माने को home रे में manage करि परिबा with home based pulse oximetry तांको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में प्रोवाइड करि परिबा हाउएवर हॉस्पिटल बेस्ड रे भी हमरो जो पेशेंट माने लो फ्लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अछि हमर ऑक्सीजन क्राइसिस टाइम जो थिला हमें सेही पेशेंट मानो को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लो फ्लो ऑक्सीजन देकी मैनेज करा जाछि ताको फर्दर हेल्प करिया पे हमें जो पेशेंट भी ऑक्सीजन दरकार पड़छि ताको अवेक प्रोनिंग ताको सम इंडिविजुअल
पेशेंट को हमें अवेक करनी गोटे पेटे की सोइले ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करो ताकू आउरी अधिका एम्फासिस देले हमर ऑक्सीजन रो रिक्वायरमेंट पेशेंट मानक पई कमी जिवो हाउएवर गोटे डिमेरिट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मु कहबी जोटी इलेक्ट्रिसिटी फेल्युअर अछि हां सेठी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रो असुविधा कारण सेटा इलेक्ट्रिसिटी टोटली रिक्वायरमेंट होची इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हां तो जो घर मानकर इन्वर्टर अच्छी हाई वोल्टेज इन्वर्टर अच्छी से माने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिना भय यूज करि परिबे और लो फ्लो ऑक्सीजन दरकार जा किंतु जोटी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमरो 4 to 6 लीटर्स रु अधिका क्रॉस करूची सेठी विल नॉट गो फॉर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आमे सेही पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करिया पई कहबा आ सेठी से माने सिलेंडर और पाइपलाइन बेस्ड ऑक्सीजन यूज करि परिबे हाउएवर रिसेंट एडवांस रे एबे मार्केट को 10 लीटर वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आसिलानी जोटा कि होम बेस्ड ट्रीटमेंट को आउरी अधिका बाय टेलीमेडिसिन केयर होम बेस्ड ट्रीटमेंट को आउरी अधिका इंप्रूव करि परिबो आ भविष्य रे जदी 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेट 10 लीटर प्रोवाइड करला वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेट जदी मार्केट रे बेसी अवेलेबल हला मे बी दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होम आइसोलेशन रे मॉडरेट पेशेंट्स होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट हेई परिबे आउ सेमानकर साइकोलॉजिकल स्टेटस बहुत भलो रहइबो कारण सेमाने तांको घरे अछंती आउ सेमाने जल्दी ठीक हेई परिबे थैंक यू डॉक्टर पात्र वन सेकंड डॉक्टर पात्र आपन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहउछन जो वाटर विषय कहबे जो वाटर जो आप यूज करनते ता विषय से कहबे ना बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल दे गॉट माइकोसिस एंड फंगल yes so presently हमें बहुत बड़ा म्यूकोरमाइकोसिस केस इवॉल्विंग हेलानी हमें देखते हां तो हमें कहबा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्लोमीटर जो थाउची हां सेतरे यूजुअली डिस्टिल वाटर और आरो प्लांट बेस्ड वाटर हम यूज करबा किंतु ताकू हम एवरी डेली बेसिस ताकू चेंज करिया पड़ियो आ ताकू क्लीन करिया पड़ियो जदी जने ह्यूमिड एनवायरनमेंट रो अछंती हला ताको एटमॉस्फियर रो ह्यूमिडिटी भलो अछि सेठी बिना वाटर रे भी हमें ताकू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज कर परियो so that will prevent the concentrator humidifier based contamination and other secondary infections. Very good. You can use it as a boil the water and then put it in the cold it and make it as a also use as a sterile water. First boil the water. You can use the normal boiled water. अच्छा hold it and then as a you can use as a humidifier. Thank you, Dr. Kyle. That is okay, but as Dr. Patra said, we need to change the water every second day at least every 24 hours you have to no change matter how. So that's a basic thing what Dr. Patra is trying to say, which is good. I have a question for Dr. Atosu Naik, our cardiologist with us. Atosu, this is a question je jane pacharchi je e jo vaccine और myocarditis विषय that COVID vaccine in teens and myocarditis, what are the risks and long-term consequences? Myocarditis, that's should my child take it? Yeah, actually, yeah. First, I will answer the first part. Koibi, tapor the second part question answer. Actually, the recently our JAMA re gote paper astila about 100 people COVID infection hitla, and after few months when they did the MRI, semane dekhile tanku 60% of patients had got focal myocarditis. Focal myocarditis means small patches of inflammation of the heart muscle. So, and this happened after even few months. So, this focal myocarditis can even last for up to 6 months. I have seen so many patients who come with basically long COVID syndrome. Last time discussion kartilu, that is after 12 weeks of COVID, and some palpitation, chest pain, and when you do MRI in some patients, we still see focal myocarditis. You know, myocarditis rohi pare, kintu best of usually it is reversible and they get better. That is number one. Number two, the chua manakar jo vaccine kotha कहउचंदी हमरो एठी ट्रायल ऑफ कोर्स इंडिया ओडिसा भी आरंभ होईची कोवैक्सीन ट्रायल एठी अमेरिका रे हमें वैक्सीन ट्रायल नाउ इट इज गोइंग ऑन बिटवीन two groups. One is 2 to 11 years of age, and of course from 12 onwards have been approved. Pfizer has been approved for that, for 2 to 11 years of age and 6 months to 2 years of age. In Pfizer vaccine amar ethi jo miluchi, that result is going to come out in couple of months. But only thing in Moderna vaccine, Moderna ame 100 microgram dothulu the mRNA. Ethi jo 2 doses ame trial korchini 50 microgram and 100 microgram between 2 to 11 years of age. Now between 6 months to 2 years of age, Moderna has even decreased the dose
from to 25 microgram and 50 microgram, 2 groups, and Pfizer is still continuing with the 25 microgram. I just wanted to remind everybody that Moderna we give about 100 microgram of mRNA. So if the age is more than 12 years, they can take Pfizer vaccine. I don't think it is available in Odisha or India yet. So they have to wait for the Covaxin trial to come out. I think the result was September. So then they can give. And otherwise, below 11 years, I think we need to wait for some more data. We have 2 patients in the cardiac intensive care unit. Still they are there, but one is very transient. It's not that is a permanent changes occur in the cardiac things, but only transient myocarditis happen only for 1 up to 2 weeks. After then, they did the echo, and the echo was fine, and cardiac function is much better than the before. It is only transient. Is a 12, one is 12 years, another is 15 years. That's right, Ajit. Most of the time, most of the patients, cardiac function come back to normal unless they've got severe infection or they are on ECMO or they are on ventilator for a long time. Most of the time, myocarditis is reversible. Yeah, please make sure you speak in ODIA. ODIA. Most of them, about 90% of patients, their heart function normal after myocarditis. If they have documented myocarditis, normal. Few patients it may stay for a long time, but overall prognosis asymptomatic or mild infection. This is good. Yeah. But long-term sequelae, it's only 1 year after the onset. So we don't know what will happen after 2-3 years. So for now, Jyoti is saying actually very important point. The whole idea is not to get infection. If you get infection, you should look for the mild infection. How to have mild infection? Basically vaccination and CDC guideline. Into jodi infection, severe infection we don't know that long term hopefully it will be better. But most of the people will recover completely. So thank you, Atasu. Dr. Satya Rautrae ko one question achi moro. Pacharchande, what precautions can I take to prevent COVID-induced cardiac complications? ODIA କହିବ ସତ୍ୟ ଟିକେ। COVID precaution to take to prevent COVID-induced cardiac complications. I don't know what ସେ କହୁଛି ଯେ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯଦି କୋଭିଡ ହେଇଯିବ କଣ ଆଗରୁ ମୁଁ କରିବି stay fit so that my heart is stay healthy. So ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। I think it's the same thing I'm asking you. Very difficult to tell me in Odia. The thing is that what precaution you take means after the COVID, what are the things you are going to do so that you should not develop any cardiac complications? Maybe that. Okay. Na eta to samasthang chaibi they will contribute Atasu Jyoti everybody ete contribute karibe karan jemiti COVID gote rogo ta bisare sampurna bhaବରେ ki jana jae. Acha बर्तमान कॉम्प्लिकेशन आम बर्तमान कहे मायोकार्डाइटिस यहाँ हूँ फोकाल मायोकार्डाइटिस बेसी हो जो मानकर डिफ्यूज मायोकार्डाइटिस होची हार्ट फेलियर होची एक्यूट हार्ट फेलियर जाउछंती ए फोकाल मायोकार्डाइटिस हम जानिना हम भाबुचे एटे इंप्रूव करि जिवो कि सेमानकर एरिथमिया हबार चांस अछि तो सडन डेथ होची परे ए फोकाल मायोकार्डाइटिस रे एरिथमिया हे डेथ होची सडन डेथ इज ड्यू टू एरिथमिया you cannot prevent, you cannot protect myocarditis. Focal myocarditis main function may improve, total function, global function. तेणु सेटा गोटे प्रॉब्लम रोचे हमको मेनली कथा होची जोटा कोविड हबा पूर्वरु हार्ट को ठीक रखिया पे हेले हमको हार्ट रो जो रिस्क फैक्टर गुडा अछि से दिटा पार्ट नबा से रिस्क फैक्टर गुडा कंट्रोल करि रखिया पड़िबो तेणु हमरो डायबिटीज कंट्रोल रखिया जदि कोलेस्ट्रॉल एलडीएल टा अधिक अछि ताको भी कंट्रोल कर रखिबा वेट अधिक अछि वेट को कम रखिबा आई मीन न्यूट्रिशियस फूड खाइबा एवं जोडा को रेगुलर एक्सरसाइज एंड इम्यून बिल्डिंग योगा एंड एगुडा सब करके बॉडी को फिट रखिया को अछि एवं हेला परे जेटा डॉक्टर कायल टेलिंग हेला परे हमको मेन हला रिहैबिलिटेशन जोटा में हेले जदि एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड कोविड you can go for the rehabilitation आप शीघ्र जाई पारन किंतु मॉडरेट बा सिवियर जोटी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होईची जोटी की हॉस्पिटल एडमिशन दरकार पड़ची जोटा में शीघ्र रिहैबिलिटेशन करबा नाही हमको बहुत स्लोली रिहैबिलिटेशन करिया कोची काईटा लंग्स और हार्ट दीटा को देखिया कोची लंग्स जदी एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन न होतबो आपण रिहैबिलिटेशन कला माने ड्यूरिंग एक्सरसाइज फॉल ऑफ ऑक्सीजन हबो
and hypoxia induced arrhythmia all possibility एगुडा सब हबार चांस अछि तेणु एटा स्लो rehabilitation mainly to remain away from infection or secondary infection किछ न हो that is ए lungs रे भी हमें देखु जो माने कर होई केयरफुल न हो जन secondary infection है कि एडमिशन हो जंती कन एठी दीटा का परिपूरक तेणु हमको सेगुडा जगिया पड़िबो रिस्क फैक्टर जगिया पड़िबो a slow immune building drug I mean nutrients नबा पड़िबो slow exercise करिया पड़िबो and gradually अब build up करिया अछि अब अन्य माने जे एथरे कोन किछ कहि पारंती सेटा सत्य भाई सेमते अतोष भाई knows सेति पई the most of the research now is for athletes because athlete that's their livelihood so they have to get back to exercise quickly so most of the research after myocarditis are focused towards athletes first to see the outcome what's happening there जति तमे जो कहलो एक्चुअली एबे मु आमे भी देखुछु तमे से देखुतबो बहुत लोकंकर बर्तन एई पाल्पिटेशन हेमान को आमे यदि प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट न करबा 24 कि 7 डेज पर तमे आमे यदि न करबा ताके होल्टर आमे भी जानि परिबानी समानकर कोन होउची बहुत समय बहुत लोक मो पाखो आछन पाल्पिटेशन चेस्ट डिस्कम्फर्ट बॉर्डर लाइन एलवी फंक्शन देन इट्स समटाइम्स नॉर्मल एलवी फंक्शन सेदारे आमे जानि होउनी तनो स्टिल द थिंग्स आर इन लिक्विड स्टेट हमें समस्त को केयरफुल मैन हबा पड़ो थैंक यू सत्य भाई या करे जो आपन जो कहले आपन जो कहले जो पाल्पिटेशन करे एक्चुअली आमे भी एठी पेशेंट देखुछु लाइक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जो मन को इवन लास्ट टाइम डिस्कशन करथुलु somebody can be asymptomatic but can have long covid syndrome हे पारे तेणु आमे भी बहुत पेशेंट देखुछु पाल्पिटेशन आपन निमिति कहले सडन कार्डियक डेथ लाइक होल्टर करबा कि हार्ट रेट गोटे मास मॉनिटर करबा दैट्स व्हाट आमे भी एठी करूछु आई थिंक एरिथमिया वी नीड टू प्रिवेंट द एरिथमिया मु जा देखिछि साइनस टैकिकार्डिया माने नॉर्मल हार्ट रेट बेसी सेटा द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन मु देखुछि पर्टिकुलरली आई हैव सीन एक्चुअली nurses healthcare workers they come with this long covid syndrome palpitation chest pain shortness of breath and all these things that's because of the anxiety and also deconditioning because being sick for a long time अतसु जति तमर ओपिनियन चाहिबी मु एठी प्राय मोर 5 जन पेशेंट अछि जो मानकर कोविड टाइम रु एवं ता परटो ब्राडिकार्डिया से ब्राडिकार्डिया से दे ऑर्सिबेस्ट हम खाया पड़ुची मु तो केबे एथरे देखि नै माने आई मीन रिसर्च पेपर्स देखि नै ब्राडिकार्डिया हवा दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड and heart flow actually bradycardia में hospitalized patient रे बेसी देखुछु but किंतु bradycardia मु एतम तो देखिनी but I am seeing lot of long covid syndrome usually heart rate टिके बेसी था I am also seeing lot of POTS माने postural orthostatic tachycardia syndrome कहउचंती छिडा हे गेले तांको ब्लड प्रेशर कमी होउची हार्ट रेट बढ़ी होउची I am seeing particularly in females young females मु देखुची से माने and you know basically the treatment I have not given any midodrine or anything but you know like lot of water and Vijay kohe amaro jo immunity I follow that you know improve immunity vitamin C D zinc and other things and they do a little bit of salt water they do very well actually I think I just I need to ask you something it is true that the people who are coming after the post covid when they coming after 6 weeks they coming for the operation we have seen lot of patient has severe bradycardia heart rate of 40 or 45 and once you go putting to anesthesia patients some of the patient is almost arrested so you be careful of the advising the patient I think we have seen probably we're going to produce this data very soon and it will be published that the post covid patient if you go for the operation you must check the ECG of course अपन जाक भलो कथा कहले हम देखु हम डाटा किछि नाही त मु सीधे पचाले अपन को भी यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस कैन आई स्पीक द क्वेश्चन पचारचंती केटी क्वेश्चन पचारचंती जूम रे दुईटा क्वेश्चन अछि बट अछि वीरेंद्र जना पचारचंती इन हाउ मेनी हॉस्पिटल इन ओडिसा ECMO इज अवेलेबल राइट नाउ मनोरंजन का या इट इज सो वर्तमान हमर सोम हॉस्पिटल अछि and किम्स रे मशीन अछि बट तांकर से करूनांती एम्स रे एबे स्टार्ट हेई जी गोटे मशीन एम भुवनेश्वर स्टार्ट हेई जी एंड एससीबी अरे हम 6टा मशीन प्रोफर करि जाउ काली तार प्रीबिड भी मो थिली प्रीबिड रे मो थिली प्रीबिड करि छु काली प्रीबिड ता 6टा मशीन रो प्रीबिड कर
And So some hospitals they are starting ECMO, no? Because I know Dr. Ray has started the ECMO. I remember. Yes. Dr. Ray has started at Storm Hospital. And also AIMS Bhubaneswar, they have also started. Sir, ସମସ୍ତେ technician Dr. Odisha ର ତ I mean, it's a great pride for us. Odisha pride for us. Doctor, ODIA technician. ODIA technician Calcutta रे काम करते I would a question. I would a question. भाई Following Jyoti जो question को Jyoti गई तला, my uncle is now COVID negative after 40 days. It has Facebook Live. He was positive earlier. Now he's having regular pain in the chest and some vomiting. What should we do? We are afraid to take him to hospital as he may get COVID positive again. Jyoti, you're there? Again, जोटा मु कहूतिली तांका risk factor कौन अछि? If there is like the risk factor, diabetes, family history, high blood pressure, we should be careful here. Most likely he had, it could be just angina that just showed up after COVID hela pore. Tenu definitely mu doctor ki cardiologist mu consult karibi. Not thinking that again COVID heichi, I will think about heart re kichi blockage ki kon aram heichi or thila eta show up karchi. Acha. So basically doctor pa kuch hospital जाएंगे doctor pa करेंगे. So the verse is did you say chest pain and nausea or chest pain and vomiting? Yeah. Vomiting, that's not a good symptom. Yeah. Yeah, especially if they are sweating and all, definitely. Yeah. Right. Yeah. Exactly. Yeah. Basically, they need to report to the emergency room. Simple answer, right? Yes. I just want to say that it was an excellent presentation. Most of the people think that chest pain is good, but it can be much more dangerous. So they should see a cardiologist. Sir, one thing I will tell, no symptoms should be ignored in COVID. Any symptoms should have, any vague symptom also used, or the clinician should take it is important. So no symptom is like cannot be ignored. Because COVID is affected all the organ, all the system. Yeah. So there was a Facebook रे जने lady comment देथिले मु जोटा बोधे पढी परनी के देखा जाउन छटा होबे से लिखिथिले तांको और तांका हस्बैंड को कोविड हेतिला but because our जो food program ପାଇଁ they were able to eat and she says thank you. Yeah. Thank you. Question अछि, otherwise we'll wrap up. हमर हे गलानी almost 2 hours. Question और किछ नहीं, समस्त appreciation देचंती chat रे. Thank you, Dr. Manoranjan Patnaik. Can I ask you something? Yes, sir. Yeah, sir. Welcome. Thing is that while during the first wave and during the second wave, what is the difference? Do you think the D-dimer level is much higher in the second wave compared to the first wave? Yes, sir. So I will tell. So in the first wave, we have got two phases. One phase is the viral phase. Second phase is the inflammatory phase. Yeah. And the viral phase usually for 7 days, 7 to 8 days in the first phase. But what happens in the second phase, we are seeing the viral phase is persist for 4 to 5 days. And immediately jumping to the second phase, inflammatory phase. So even if at the 5th day, the viral, we are seeing the thousands in the range of thousands, D-dimer, 5,000, 6,000. Yes. So in Punjab, yes, we're getting some of the D-dimer level of 25,000, 20,000. Yeah, that happens. So very important is this inflammation is very aggressive. And it depends on the virulence of the organism. So if the organism is more virulent, then the infectiousness and the inflammatory, that also goes increasing in the virulent stage of the organism. So more virulent organism is meant for this thing. Thank you. One that is the question reason for you why from my side. most of the patients are probably died in the intensive care unit. Yeah, only 3rd day, 4th day, young boys, 30 years, admitted, immediately intubated, on 3rd and 2nd and 3rd day patient died. So this is not happening last year. It's a fast COVID, actually a lot of patients being out from the ventilator. But this time, once in the ventilator, you intubate the patient, there is a ventilator, then the mortality is very, very, very high.
in the Again, second I would be mark करचे गत थर जो होतला सेतले जो मानकर कोमोर्बिडिटी होतला से मानकर बेसी फैटालिटी होतला एबे बिना कोमोर्बिडिटी रे भी फैटालिटी होची. Yeah, that is the important thing. Yes, that's I've seen that. Can I ask you a question, Moranjan bhai? Yeah, go ahead. yeah. Thing is, about the COVID pneumonia. Is it Yeah. truly pneumonia? Or is it a microvascular clump of blood clot sitting there? There are two things. One is the role is the alveoli because of the exudation. Second is the microthrombi. Two factors. So we have to target two factors. One by oxygenation of the alveoli, pneumonia, and also microembolization. Also, you have to take care of the microembolization. So my second, so second question is to Satya bhai. If it's microembolization, what are we doing for anticoagulation? No, actually, what here we are following, that is also international guidelines says, जदि moderate and severe hospitalized patients सेमानंकु समस्तंकु prophylactic low molecular weight heparin दिया होची. जदि भी घरे लोक रहिला जैसे से सोई के रहउची बेसी मूवमेंट करू नाही ताकु भी prophylactic low molecular heparin to prevent deep vein thrombosis and embolization. One एवं ता परे सेमानंकु usually oral anticoagulant preferably NOACs दिया होची एवं mild say about 2 to 3 though guidelines are not very consistent, moderate to severe 4 to 6 weeks. So, sir, can I ask you a question? Yes, sir, can you use this continuous heparin infusion? Because one of the patients is now getting in Apollo, one of our friends, Dr. Bhavani Shadangi. So probably sir is seeing. I am seeing the patient. He has a bleeding episode yesterday. I mean, day before yesterday, and he was getting continuous heparin. Then they have probably decreased. तार जो ब्लीडिंग हेइतला आईवी साइड टे ब्लीडिंग हेइतला एंड ओरली ब्लीडिंग हेइतला तापरे हमें पीटीआईएनआर एपीटीटी सब गलो दैट कम्स टू नॉर्मल नाउ टुडे वी हैव डन द ट्रैकेस्टोमी कर दे patient is doing well and the initial because of sir now is he taking this low molecular till now? Today he must not have taken. But is there any plan to keep him on? Just आमे दिन तो पूर्वरु गोटे दिन आमे बंद करथिलु जब पीटीआईएनआर नॉर्मल आसला तब अगेन रीस्टार्ट करछु आमे लो मोलेकुलर स्टार्ट करछु सर थैंक यू अरे इको हेची पल्मोनरी एम्बोली पल्मोनरी थ्रोम्बस नहीं मेन पल्मोनरी नहीं तार प्रॉब्लम थिला कोन हैला सतेउ तार जेतबेले प्रथम इको करा हला तार इजेक्शन फ्रैक्शन थिला ईएफ थिला 62%. Number one, but he has got severe pulmonary arterial hypertension. So he has got pulmonary arterial hypertension. So we thought must be some severe microembolization. So even through that case, though he is getting the Nexa 80 BD, but we make Prashant make it into a infusion. Because if there is pulmonary embolism, we are suspecting this. But yeah, we made it. हमें heparin infusion कलो. Infusion परे तार दिन परे हम पूरी आउथरी को कलो. से PA pressure थिला 73 ना 72 थिला. That come to 47. So why not CTA? काई CT angiogram कले? Why just echo? नहीं CT एंजियो काहे कलो पेशेंट कंडीशन वेंटिलेटर अछि ताकर वेंटिलेटर शिफ्ट करी इंट्यूबेटेड एंड शिफ्ट करियो शिफ्टिंग विल कॉज प्रॉब्लम पर CT एंजियो कलो नि से भाई हम कलो sir one more question can you use this fundafarinox instead of low molecular weight heparin in other cases fundafarinox can you use instead of low molecular weight heparin renal failure नथियो fundafarin use कर but heparin is short acting you can stop and reverse if there is a toxicity. That's right. Heparin infusion is quite good actually. Yes, it's good actually. In patient heparin infusion monitoring and maintenance is much better. Much better and much easy to do it. Right. Yeah. And he's a good friend, very good friend of ours, and it's very sad story. And thanks Manu bhai for taking care of him. Be here. No, he's very serious. He was very serious. Now he's better. Good. Yeah, I got a question. I'll ask Atusu bhai to pick it up. After how many days can I take COVID vaccine? Though we had answered, but somebody just left, so I don't want it to be unanswered. Yeah, after how many days of getting COVID infection can take COVID vaccine? Yeah. Actually, in US, the guideline is 3 months.
So after 3 months, everybody has to take vaccine, and there is no need to do the antibodies. I think that must be the same guideline I was told by somebody. Yes, yes. And the UK has the same thing. India is same. So let me thank everybody. Thank you, sir. I got the answer, sir. Thank you. So let me thank everybody, Manu bhai, Satya bhai, and Dr. Patra, and for all your wonderful presentation. And within a short notice, mo tige dine di dine koili mo bhai ro birthday thila, I was off, and you guys pitched in. I really appreciate. I'm 32 years pare dekha hochi. It's such a wonderful experience, but really thank you very much. And amara Basant bhai, Sangeeta, Jyoti, and Atasu bhai, our internal core, Nanak bhai, our mentor, he is there. Kal rati 12 pond bastale bichara. So my respect, regards for you all. And let me stop the recording. Then if you guys want to talk. So we thank very much to our global ambassador Archita. Yeah, Archita and Sabya. We thank you very much, Archita, for staying. Thank you very much, really. And Rasmi too. Yes. Rasmi. Archita मोर family member है गला, मुझे भूली गली. थैंक यू कहबार किछि आवश्यकता नाही, किंतु आपण समस्त को एक्चुअली थैंक यू. माने आपण मु देखुतली 2 घंटा समय धरि की माने आपण माने विदाउट एनी अदर इंटेंशन आपण माने सेल्फलेसली समस्त को एते भाबुछे एते करूछे, सेति पई की थैंक यू. Thank you, Archita. No, we have to do it. Alga community, Punjab Sikh community, Gujarat community, they are doing. Why can't we do it? And the best thing is, we meet in the right time. ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, strain ହବ with busy schedule, COVID project ଚାଲିଛି, but I appreciate. And another example is Sabya ଆମର, Sabya Sachi and Archita. ସେପଟେ ସେମାନେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, Smile Force କାମ ଚାଲିଛି. ଆଜି grocery ଦେବାକୁ ଘର ଘର ଯାଇଛନ୍ତି. ମାନେ leprosy patients को, COVID patients को, they have gone to distribute. କାଲି ରାତିରେ ଫଟୋ ପଠଉଥିଲେ କେମିତି preparation ଚାଲିଥିଲା. It is extreme and massive work. ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, but ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ. Big thank you to our audience. काइना से माने न सुनिले हमर कहिवार किछि मूल्य नै. आउ जदी भी किछि क्वेश्चन अछि आपण माने एनी टाइम हमको पठि परिबे. हमर एक्सपर्ट पैनल समस्ते हमें वेट करथिबु. आउ जदी आपण आउ किछि टॉपिक डिस्कस करिया को चाहउछंदी सेटा भी जणैले हमें सेटा एड्रेस करिबु फ्यूचर रे. एंड हमर टेक्निकल हेल्प रश्मि एंड निहार. Yeah,